शिवो, आपने मैसेज देखा क्या मेरे टीम ग्रुप पे? हाँ, मैंने देखे अनलेस इट वाज पोस्टेड जस्ट नाउ। इट वाज पोस्टेड लाइक आई डोंट नो, हाँ, देन आई हैव सीन इट। 8 8 minutes ago, 10 minutes ago. मैं देखता हूँ। Hi Atin, thank you for putting it on recording. Guys, give Atin a few minutes. खाली चावल और नमक भी मिल जाता तो हम लोग को मार भात भी खा के कुछ दिन हम लोग जिंदा रहेंगे। हवा पी के कितना दिन जिंदा रहेंगे। बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने हीरो बनाया है। हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने सबको अपनाया है। हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, how to celebrate, how to observe, how to create, how to transform, how to celebrate। miracle awareness लाइफ में लाया है, हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है। हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने हीरो बनाया है। मानो नहीं जानो का इक्वेशन जान गए, क्वांटो सिंथेसिस से खुद को पहचान गए। मानो नहीं जानो का इक्वेशन जान गए, क्वांटो सिंथेसिस से खुद को पहचान गए। देवों की शक्तियाँ अपनों का साथ है, उपनिषद वेद पुराणों गीता की बात है। क्वांटम साइंस से जीवन निखारा है, हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने हीरो बनाया है। हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने सबको अपनाया है। कर्मवीर बने ज्ञान वीर हुए, कॉस्मिक वाइब्रेशन हम सब से एक हुए। कर्मवीर बने ज्ञान वीर हुए, कॉस्मिक वाइब्रेशन हम सब से एक हुए। प्रेम की गंगा हरदम यहाँ पर बहती रहती, जागी है सिद्धियाँ अब तक जो रही थी सोती। प्रेम की गंगा हरदम यहाँ पर बहती रहती, जागी है सिद्धियाँ अब तक जो रही थी सोती। शिव शक्ति के मिलन का अनुभव निराला है, हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है क्वांटो लाइफ ने हीरो बनाया है। हीरो बनाया हमें हीरो बनाया है
क्वांटो परिवार ने सबको अपनाया है। क्वांटो क्वांटो लव यू क्वांटो, 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 क्वांटो लव यू क्वांटो, क्वांटो लव यू क्वांटो। Hi, pranam everyone. Pranam. Pranam. And thank you to all the people who have come, and also people who have kept their cameras on. बहुत energy मिलती है आप लोगों के चेहरे को देख के. So I really appreciate it. और I am feeling so blessed, so blessed. About Quanto Life. Quanto Life is a unique spiritual path. और कितना unique है ना, वो रोज अलग अलग टाइप से रिवील हो रहा है. I would say that even in the past 10 days, what Quanto Life has been downloaded by Shivo. It has downloaded on him, several years ago, but we are still getting the revelations of what that uniqueness is, what that path is. There is it is the synthesis of science and spirituality. It is the path of heroes. It is the path of discovering your fragrance. But this time, in these 10 days, we realized how much it is the path of creation, and particularly value creation, that is Srajan Tantra. So there is such a, I think that this story of this Shakti Sadhana will go into our Quanto जो mythologies होते हैं ना, जो epics होते हैं ना, उसमें ये जरूर जाएगा. Before I get into that story, because you all have lived it with me, most of you have lived this together. We have lived this together. And before I get into that, I would like to call upon and bow down to Shivo, who is our guru, who is a Brahma soul, who has Shiva आप कैमरा पे आइए ना. हाँ, अभी इधर पावर कट चल रहा है तो एकदम पावर अंधेरा है. हाँ. अच्छा ठीक है. क्या प्रकाश बात से है, अंधकार की ओर, अंधकार से क्या प्रकाश में, बात प्रकाश है. से अभी अंधकार की अभी ओर. अभी क्या क्रिएशन होने वाला है शिवो. हाँ, because darkness is the source of all creation, है ना? Exactly. So that's what I'm saying. कि already we experienced one at the very beginning on day 0 of Shakti Sadhana. अभी क्या क्रिएट होने वाला है? So anyway, हम so we bow down to Shivo, who has really taken us through chaos. Okay, and people who have been in the team, or even people who are the participants, you have seen there has been chaos that has in most cases been divinely given. Okay, divine created that chaos. और और जब chaos होता है ना, तो इतना unstable हो जाता है, इतना blank हो जाता है, and you need someone to even tell you this is chaos. You need someone to tell you that this unstableness is Ma Kali. And that is Shiva. Okay, this is who I am. This is what is the reality. How can we create value in this? And this is who Shiva is. And when Shiva is being himself and all these things are happening, there is a seeding of a new vision for Quanto Life. And there was a seeding of Srajan Tantra, okay, which is a value creation system. Shivo, would you like to share that what have we seeded about Quanto Life this time? What is the new revelation you've had? So this is something very apt for today's time.
we needed a fundamental of creation, which is very organic. Why it has to be organic? Because times are changing very fast. If you now work based on developing goals and strategy for next 3 years, those are going to fail, because whatever you are thinking the world is going to be, that's not how the world is. So uh, we need to live in the moment and yet be able to plan and move uh, ahead in with a long term vision. So these are the contradictions, the paradoxes of the current time, and this is what we have been addressing in Quanto Life. But now there is a system around it. There is a system to deal with chaos and yet move into the grand creations, and that's what the Srajan Tantra is. And another thing, as I shared before also, uh, we had these Mahavidyas, and we know that how there was this left-handed tantra and all kind of negative stuff, and those tantrics invoked Mahavidyas and did all kind of negative stuff, and that was an inspiration or guidance or order I had from Ma Bagla Mukhi, uh, uh, where she said that uh, now it is a time that Mahavidyas become free from all that and they flow into some alternate. And it happened 7 years back, and there is a video of mine on Ma Bagla Mukhi. If you go to QuantoLife YouTube channel, go to the Conscious Pilgrimage, and you will find the Ma Bagla Mukhi video there. So there I had spoken 7 years back about my experience of Ma Bagla Mukhi. Uh, there was a certain interaction where Ma is saying that she want to be free from these people and want to flow into some alternate. So then we realized, and that time I had promised that whatever I can, I will put myself into this. And now the time has come after 7 years when all this Mahavidya started to happen, and then suddenly there was a huge chaos on the day of the intro session also, and then suddenly there was a shock, and then there was a creation actually. If that shock was not there, there would be no creation of the Srajan Tantra itself. So now that system has arrived and it is going to evolve. It will take 10 years, 50 years, 100 years, 500 years, whatever time it takes. But this system is going to evolve. So now the Tantra, where this is an alternate system of Tantra where it is about creation and not about destruction. Yeah, Mansi. Beautiful, Shivo. Do we have someone in the team who can do some reporting? Or is that already being done? Avnas? And Mansi, Atin, can you... I'm trying Yeah. to figure it out with somebody. Okay. Let's see. Okay. If Manisha is available, I can see her. Or, yeah, I can see Uttara also. So, yeah. So I would like to... So what we'll do is we'll have participants sharing, but we'll also review. I'll do it after having my dinner. I can't type with one hand. Okay, no problem, Uttara. So, okay. So I'll start with day 0, what happened on day 0, and we will review the concepts. So this is also Shivo, and please pitch in wherever you can. Atin, can someone Atin, can you please make co-host, or can you make someone the host? Okay. Okay. So, Pranam Dineshji. So the day 0, we went to Mahaleshwar Mandir, and as soon as we announced Shakti Sadhana, people started joining the group. And Shakti Sadhana is one of our most, because it is full of Shakti. It is what Shakti Sadhana is.
people started pouring in. And I think we were 55 people who were gathered for Mahaleshwar, at the start of this Shakti Sadhana session. And then we had darshan, and sometime, people started leaving, and suddenly the Zoom went kaboom, and literally, and then we came back, but only with half the people. It was really a shock to the system. There was a lot of instability. We were going to invoke Ma Kali, and I was extremely excited about the Shakti Sadhana because Ma had told me that she was going to reveal her form through Mahavidyas. Before this, I had no idea of the Mahavidyas except that there are Mahavidyas. I had no real, I had not visited any temples. I didn't know anything. Of course, we know Ma Kali. But other than that, I was completely blank on this. And I was very excited on what Ma is going to reveal herself to. And I started like connecting to this. After she told me, I was just like basic information, what are the names and all. And the first day we were planning to invoke Ma Kali. And every Shakti Sadhana, before yeah, can you mute yourself? Can I? Yeah. So, during Shakti Sadhana, Shivo had. आवाज आ रही है एवं नहीं आवाज बंद नहीं होती है Shivo, I'm going to mute you. Sorry. Yeah. So, Mansi, can you claim host and make me a co-host because I've been trying to have that contact, yeah, organized. I will Yeah. actually thank you for Okay. reminding me that I can claim host. Thank you Okay. so much. Thank Abnaz, I'll make you the host. You can make everyone the co-host. Okay. Okay, dear. Thank you. Thank you, Abnaz. So, on day 0, what Shivo had done was he had connected the planetary energies to the 9 Shaktis of Navratri. Okay, all the planetary energies he had done. The new step that we did this time was I correlated all the Mahavidyas to the planetary energies. Okay, so this was something new we did. But what happened is, when this whole thing happened and Zoom went kaboom, it was really, we felt that instability, and we are like, where are we going? What is Ma's message? Did we miss anything? All this chaos was happening, like, I don't know what to say because everything that we had planned was gone. Someone was supposed to ask us questions. This person is not there. All this is happening. And Shivo tells me that, you know what? I had his book. And Shivo told me, just open a page and ask what Ma wants us to do. And I think in that 15-20 minutes, when I opened the page, I probably had my first very nervous but a total smile, and I felt कि ये match fixing हुई है. Even though I picked the page myself, and that page and that page was like page 515 in my book, which was value creation, and it talked about the pyramid of value creation. And I was like, this is Shiva's favorite topic, like all-time favorite topic. And Shiva said, okay, you know what? I was reading the value creation, and he was talking about it, and suddenly he's like, okay, you know what? These are the 9 dimensions of creation. And this is where we are inviting Shakti into. So on the spot, this whole system got created, and there was so much, literally you are on unstable ground. You are totally on unstable ground. And that night, even after invocation, that's when Shiva told me that this is Ma Kali, this instability of everything that has happened. This chaos, this is only Ma Kali. And then from there, we moved to creation. And we really lived, along with the team and all the participants, we lived that creation. So I would, as I go, before I go to the next day,
would anyone like to share their experience or some insight they had? So if you would like to share, and if you are here, please let us know in the chat. Let Abnaz know. I think that I think Manisha had given her name, and Preeti. I think Preeti is going to talk during Dhumavati. Shobhaji, would you like to say something about the Shakti Sadhana? Or are there any participants who would like to say? Yeah. No, it was actually everything unfolded that day. Uh, and it was, though my second year consecutively, but still it was so amazing. And this Mahavidyas was a new concept. And how that value creation and that 9 dimensions, that was mind boggling. And it was so overwhelming. I mean, I was totally didn't know what to, where I was, and it really made great impact on my thinking. And this, I really bow down to you, Shivo sir, and you, that it was wonderful experience to be in that dimension with you all, with the soul family. Something really wonderful thing happened. Shobhaji, anything that is striking you, any insight that you have, it's really like fixed in you, or anything that stands out, any moment that stands out, or any insight that you felt was very relevant, that this is your takeaway? Because we used to write takeaways every day, but Yeah, my So for takeaway is me, that value creation and at all dimensions, and finding your ecosystem and knowing Mhm. what you are not. These are my Ah, takeaways, that yes, who am I is always we are trying to, but what I am not, that thing. And that I am responsible for my circumstances. These are my takeaways, that yes, it's no one else, but I am responsible for my circumstances. And how to apply knowledge to technology, all these nuggets means they are really, I've noted down, and going to explore and apply as wow, much thank you. possible. शिव, आप कुछ बोल रहे थे? Thank थैंक you. यू शोभा जी. Thank you. यस शिव. yeah. So what I have to say is, there is a grand chaos, and we try to find solution, or we panic, and both kind of responses are will not take you anywhere. If you try to find solution in chaos, you cannot find the solution, and you can just collapse. That is again a destruction has happened. What the chaos needs is to be totally in deep trust for life, and to be totally present. If you are in deep trust for life, and if you are totally present, then the chaos will transform into creation. Only thing requires for chaos, see, chaos already has a huge raw material for creation. What it doesn't have is the organization. And how the organization comes is when you are an observer, because observer is the ultimate organizer. That's how the cosmos got created. That's how the subatomic particles got organized as atoms, and the creation began. So yes, the crux is observation. Yeah, and here there is a very important role of having a spiritual, having a wisdom circle, having a team, having a spiritual group. Because when you are going through that chaos, it helps that someone is in that space reminding you that this is the instability. Hey, remember? Because in that chaos, there is, when someone or some space can hold you and remind you, okay, this is what is happening, right? That makes all the difference. That is going to make a huge difference on whether you're going to go towards a path of destruction, or whether you're just going to maintain status quo, struggle to maintain status quo, or you're going to go into a whole new creation mode. Again, I'm going to go to day one, but I invite people to put their hands up and share their insights and takeaways as we go along. Day one, as Shobhaji said, day one was about who am I?
And even though we are, everyone is trying to figure out who I am, but not having that phrase. See, when you have a phrase that is so apt for what you are doing, all your energy organizes. Okay? So there are a lot of people who are discovering, in their own ways, this way, that way, discovering who I am. But when you know that's a step, who am I? Everything that you are doing is starting to coalesce towards that, who am I? So day one was the day of Shailputri. Now there's a difference between the Mahavidyas and the Navratri Devis. If you all have any questions also, please ask. So the difference I found was, not I found, the difference was that we discovered was that Mahavidyas are wild primordial reservoirs of energy. They got triggered, got triggered and they came out of Sati. Okay? When she was very angry at Shiva that I cannot go to my own father's yagna, she got, in that triggering of, in that trigger, all these Shaktis, all these Mahavidyas came out and they stopped Shiva from going around, and Shiva imbibes these Mahavidyas, okay, turns observer to them. Anyway, you know the story. Ma Sati immolates herself. And then when she comes back as Ma Parvati, all the Shaktis of Navratri, they are Ma Parvati's journey to Ardhanarishwar with Mahadev. Okay, so these are the 9 stages of Shakti Sadhana, and we are all Shaktis in a way doing our sadhana. Okay, so the Mahavidyas are much more wild, esoteric, huge energy reservoirs. And as Shivo said, no, that our whole work was to invite these Mahavidyas into creation, into a value creation system. And the word Srajantantra came. So first day, one of the things that really struck to me on the first day was, it's who I am, it is what inspires you, but it is how do you grow to be an asset? How can you become an asset to the world? So if you're choosing between, oh, you know what, should I go for this course or should I spend time with my friends? Both choices are okay. But what will help you grow as an asset? If you feel that you need to build those relationships at this moment, then go for that. So this day was all about finding out who I am, how can I grow as an asset? Okay. Did anyone have a experience on the first day, or anyone wants to share? Anyone else wants to share their experiences? Or Jayaji, are you here? Would you like to share about something new that you started? Uh, you know, Or you or know, you can share anything about the, you can share yeah, about Pranam. Pranam. It's amazing. It's amazing. In fact, I had just come back from Bhopal and I had misplaced my spectacles. I was having difficulty with view. I was using my older spectacles. And I have to mention this particularly because I thought there is a reason why the spectacles has gone. And this is a new one and an expensive one. And there was a lot of joking around in the community, in our own core group and other meetings about how, there's something. तो एक था कि मैंने पूरा बुक को अर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, मैंने माँ को दे दिया. एंड ये मेरा 4th टाइम मैं शक्ति साधना कर रही हूँ. और जिस दिन हमने जूम ऑन किया और सडनली जूम फट हो गया. अब मैंने सोचा Zoom मुझे हो गया. गुम हो गया. मैंने कहा Zoom देखो गुम. मनीषा के घर में मेरा चश्मा गुम, अब मनीषा का जूम गुम. एंड देन आई थॉट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है. मैं रीलॉग करूं, जूम को डिस्कनेक्ट करूं, रिकनेक्ट करूं, रीइंस्टॉल करूं. और मैंने सोचा बस कुछ तो भगवान मेरे लिए मैसेज दे रहे हैं. एंड देन थ्रू दिस प्रोसेस
जो वैल्यू क्रिएशन की बात बार बार हम लोग सुन रहे थे, उसमें मुझे एक चीज और समझ में आया कि कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, सीखने की प्रवृत्ति जो है हमारे में, अंदर में चाव रहती है, उस चाव को हम क्या दिशा देंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस महाविद्या को समझते हुए। इनफैक्ट जो सृजन शब्द था वो माधवी ने अपने चार्ट में डाला था, तो आई थिंक दैट word really came from her heart, and then it was something that was meant to be, and it just clicked for everyone. And for me, it was very special, very very special, क्योंकि मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो उससे पहले एक मंडला पेंटिंग करती हूँ। और मुझे एक चीज आया कि आंख भी ठीक से नहीं दिखाई देना है, ठीक से टेक्नोलॉजी को भी परे रखना है। तो टेक्नोलॉजी का सही दिशा क्या है, जब तक फीमेल एनर्जी मेरे साथ नहीं होगी, क्रिएशन एनर्जी नहीं आएगी, तब तक इसका जो है नया दिशा मेरे को मिलने नहीं वाला। सो आई एम वेटिंग डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। डे 5 में सडनली मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा हम जब ज्ञान की ओर ध्यान देते हैं तो वो थोड़ा सा ईगो को बूस्ट अप करता है, ईगो को और नया दिशा देता है, और ईगो का एक बहुत बड़ा स्वरूप आता है। तो व्हाट आई एम नॉट वाले में आए ना, तो आई एम नॉट सो क्रिएटिव, आई एम नॉट सो पेशेंट विथ हैंड वर्क, क्रिएटिव वर्क। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी देन, एंड थैंक यू मानसी, शिवो एंड ऑल द टीम मेंबर्स, कि आप लोगों के काम से जो शक्ति मिलती गई, जहां मैं नहीं कर पाई थी वहां मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, बट मेरे को लगा मुझे क्रॉशेटिंग करना है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इट्स जस्ट व्हाट हैज डिसेंडेड ड्यूरिंग दिस particular Shakti Sadhana, and I remember this journey is absolutely amazing, absolutely amazing, and I'm so grateful. Thank you. Thank you. Jayaji, what a synchronicity. Abnaz also started learning crochet. Today is the first day, and you're talking about it. I think that is Jayaji sent her that, right? Acha, okay, I didn't. मुझे वो लग रहा है अब ना। No, Mansi. Every time the sessions went, no. So may I interrupt? I'm sorry. I was no, thanks, please. Uttara. Oh, this is you. Thanks, Uttara, for bringing this in. But the minute Jayaji said crochet, my eyes just popped out, and I'm like, I have to jump in now. So to be honest, in school I did a lot of handicraft like cross stitch and all. And I do remember we had to make one lace for our 10th standard project, but most of my lace, the crochet lace, my granny made. Somewhere I know how to make the chain stitch, but I cannot get it round and things like that. So it was always there in the back of my mind. I want to learn crochet. And when Fiona came down for a holiday in June, her very, very good friend, like Fiona's age, 17, 18 years old, she started making projects, and as a farewell gift, she gifted it to all her friends. And Fiona brought home this beautiful dolphin, and I said, wow, now that I have to move to Delhi, I don't know how fast I'll get on to my crochet. So that I spoke to the girl, and she said, it's very easy. Go on YouTube, auntie, and you'll manage. But there was everything else but crochet kept me occupied, so I never got doing that. I went so besharam. I told that girl that I love means absolutely love devil's eye or evil eye, whatever. So I requested her to make me one hanging. I'll show it to you all. So she made me this in a jiffy, like in 2 days she gave it. And I asked myself, I said, if this child can do it, why can't I not do it? So it yet kept playing on my mind. Till the other day on Facebook, I came across my baker. See this. She made these two pretty things for me. Can you all see it? Or am I in blur vision and you can't see it? God bless. Yes, we can. It's so pretty. And then I used to follow one baker. Yeah, I used to follow one baker on Facebook, and she suddenly has started doing crochet. And she said, I want to experiment being a crochet teacher to the first batch of crochet. Anybody interested, get in touch with me. And she's giving she's giving 4 weeks of
Monday to Friday sessions for peanuts. I think only 1,000 something she's charging. So I said, I have to grab this. And y'all throughout your 9 days, 10 days kept talking about this is the best time to start something new, to see the something, and y'all should do it. This is the time. I said, I am doing this. Come what may. So today was class 1, and I just uprooted my chain. It was a beautiful session, only 30 minutes, but I thoroughly enjoyed. And I'm now looking forward to making something that how she takes us through. Let's see. Abna's God. good news. So are you learning Abna's it by good yourself? news. Abna's good news. I have already done a little flower because yes, Vijay Dashmi was the day when we have to start everything, and also that is an offering currently, so I can't show it right now. I want to extend that flower. But today I found a teacher in my society. She's an 85-year-old auntie, and she has said that she will teach me. इसमें कौन सी बड़ी बात है? आंख बंद करके crochet कर सकते हो. So Good, yeah, good. so I'm So so my class was also yesterday. Apnas, let us kind of come back to Mahavidya's and Shakti's. I can imagine there is so much excitement. Sorry, I hijacked your session. Okay. Thank you. No, you didn't hijack. It is good, but and this is such a great beginning. And this is very much like what Ma Matangi is. And Abnas, there is no hijack. Come on, camera. There is no such thing. It is like let's go to the next Mahavidya. It's only about that. Okay. So one thing we realized later, when we started to take up case studies, that most of the choices go wrong just because this one factor that people have not included this dimension of value creation, who am I? And that is why people make such choices where they resent later in life. At that point of time, they made the choice, but later they keep resenting, oh my God, why did I do that? And they spoil, they waste, or they remain frustrated, depressed their whole life. So that is one thing about the day one of who am I. Second thing, which was aha moment for me, when Dinesh asked this question, what was this question? How does who am I become a resource? Right? Right. How does, so Dinesh asked this question, when does, most of the time, who am I is something I'm enjoying, but when does it become resource? And then I had a realization and download. Who am I becomes a resource when others realize who you are. Then who am I is a resource. Otherwise, you are just enjoying it. It's not a resource. Yeah, Mansi, please. Yeah. So, so that was the second day. That is, who am I not? Okay. And that was the day of Ketu. And really, what we studied a lot was what is the difference between an ego trip, okay, going for what is trending and what is really a soul calling. There are so many things we do because everyone else is doing it. We do it because that just seems the trend and everyone seems to gain something out of it. And it may not be who I am. So it's really about who am I not. And we did a lot of choices. We also checked on whether the choice we made forwarded our purpose in the world or rejected or blocked our purpose in the world. So that was Ma Chinnamasta. If anyone had a realization about what they are not, I think Jayaji shared something about who they are not. Abna shared about who I am. Anyone else had a realization that day that this is who I am not? Just think about that, or even not that day, even otherwise, you all are welcome to share. The next day was Ma Chandragranta. It was the Venus energy. It was the Mahavidya of Kamalatmika. And a lot of Venus energy. We were like, what is the worldly gain that we can have? Right? What is the fame? What is the name? What is the
whether it adds a certain kind of beauty, glamour. We also talked about what can we what can we lose, right? What is the risk? Sometimes in life you're trying new things. When you're doing creation, you will take risk, and you have to ask that, can I afford the risk? Can I afford the cost of this? And then maybe you can afford the cost of it. Maybe something is going to cost $100 investment, $200 investment, 10,000 rupees investment, and you can afford it. Maybe 50,000 you can afford it, and it is worth. Then you just take that risk because it is who I am. It is not who you are not. So you are going for that risk. For me, this was a big day. This Venus energy, because I did set up a booth, which I shared with a lot of people. I did it at Cry Dandiya. There was a lot of movement. I think I did about 60 plus readings that day. And with everyone, I actually did a reading for a 2-year-old. I actually did a reading for a unborn baby, for a 8-month-old pregnant woman, girl. Actually, she was so beautiful and young. And we communicated to her unborn child on what is his purpose of coming. So this whole range of people, and high school. There are 20 high school students who came in, and there was just so much. I mean, I think I experienced a whole different way where it was an investment. I did have to make a booth and all those things. And I think it was worth the risk. It was more than worth the risk for me. Can I call on someone else who would like to share? Thank you, Jayaji. Anyone else would like to share their experience? Please and it could be about any Mahavidya. Mansi, how about calling Lakwinder? He's one of the few who attended, I think, every single session. And in spite of having time difference. I have no idea. Lakwinder, aap aa jaiye. I am. Thank you, Abnas, for bringing it up. It is like totally. Lakwinder, can you come on, and Preeti after that? Preeti, okay? Yeah, Lakwinder. Are you around? Yes, Lakwinder attended almost every day. Yes, absolutely. And I'm like, has he moved to India or what? I mean, Lakwinder, are you here? Maybe he has stepped out. Preeti, would you like to share? Your hand was up. Yeah, Pranam Mansi. Yeah, Pranam Shivo. Yes, I want to share the Dhumavati day experience of me. तो आते हैं धूमावती को आते हैं तो फिर अगर आपको है ना हम धूमावती को आते हैं तो फिर ठीक है when we come to the Dhumavati then. But if you want to share general, go ahead. But अगर specific जनरल I find it very मतलब मेरे को तो बहुत ही turbulences रहते हैं, although मतलब there is a lot of जैसे हमारे घर में बहुत ज्यादा disturbance है right now in terms of our one room is in repair and it's still in repair. It's not completing yet, and we haven't seen the laborers are coming back to take it up. They are gone. और अब हमें उसको मतलब एक तरह से दोबारा से देखना पड़ेगा और बच्चे का पढ़ाई भी चल रहा है और फेस्टिवल सीजन है तो लॉट ऑफ क्लीनिंग स्टफ इज पेंडिंग so there is a lot of pressure, mental pressure is there, though physical also, and there is a disconnect I am feeling तो वो बहुत observe हो रहा है तो that is under the way. सायकलचे 2 राउंड मारायचं सांगतोय खाली. तो वो chaos भी जो चल रहा है नवरात्र संपली बुवा आता नाही खाली पण. सो वो chaos चल रहा है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. वेरी ब्यूटिफुल. एंड हियर आई वांट टू शेयर actually Abnas, I don't know if you read my mind, but because you're talking about Venus na, what was coming to me ki living in a country like Moscow,
the many cultural activities you are a part of during this Shakti Sadhana. Yeah, Avnas. Go ahead. Avnas? Yeah. No, I wanted to add on Preeti's point that Preeti, can you hear me or am I lost? Yeah, you're here, you're here. So I wanted to add on Preeti's point when she said there's too much happening around me and there's no time. Preeti, I think you should point out the very important point that Shivo's asked you to do in this To Navratri. commit. Yeah, commit. That's a very important thing which Yeah. Absolutely. हाँ सुबह so मैं वही सोच रही verbalize थी it, कि Preeti, जब मैं verbalize it. yeah Yeah, I've committed to do the book session over my place. So I'm thinking of it after my daughter's 10th exam. प्रीति and not just that शिवो said कि आप ये ऑब्जर्व करो और ये माँ को पूछो कि you are getting entangled in many small things, right? That can she free up the space so that you will do the higher things, है ना? ये आपको मिशन, ये आपको तो वो काम मैंने क्या था? किया but वो there is no clarity coming. There is a too much fogging. है ना, जर्नी है ना प्रीति. Yes, yes. प्रीति, छोटी छोटी चीजों की क्लैरिटी आने में भी कई कई दिन लग जाते हैं, है ना? So there is nothing to be nervous about not being clear. One of the mistakes we make is, this reaction has always grown upon me. Whenever there is a confusion, we are just out there. We want to just solve it right now. ऐसा लगता है कि solve तो मर जाएंगे अभी दम घुट जाएगा, right? ये होता है Actually, मुझे. the wise thing is, if there is a confusion, just be with that. Ask questions. You will see that your questions will become sharper and sharper and sharper, right? And then the clarity will come. It will just boom dawn upon you. Everything will become clear. You have got to be an observation. You got to be an observer, not a problem solver. Problem is this: we become the problem solver when we are confused. No, don't become problem solver. Be the observer. और वो आहा मोमेंट की तरह से क्लैरिटी आती है फिर. Yes, true. Not like शिवा, you have और एक solved चीज something. बोलते हो. Sorry? हाँ, आप और एक चीज बोलते हो कि know more about it. Don't try to solve the problem, know more about it. Yes. तो प्रीति, gather more and more about it. क्या चल रहा है ना? वो सॉल्व हो जाएगा. बूम, घूम नहीं होगा. Yeah, I'm also waiting to get it over. When it get over. ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ये जो घाई रहती है ना हमको कि कब ये जेल की सेंटेंस कब खत्म होगी. Actually, when I think the things are sorted, something entangled, coming like a loop, na, come again and again, and a higher impact से आता है. अभी वो प्रोसेस चल रही है. Yes. क्योंकि वीनस की बात हो रही है ना, मैं अबनास को भी बुलाना चाहती हूँ. Abnas was sharing all these pictures. Shiva, this also I felt was a very Venus and Kamalatmika energy. Abnas, can you share that, the things that happened in Shakti Sadhana around you, like the cultural, like there were so many. Can you, I think you should post the pictures also later on, but if you could quickly give us a recap of, I felt that was so Venus. So in Moscow, what happens is we are a lot of Indians living here. And we are very fortunate that we get the experience of all the festivals, okay? So we just finished Ganesha during the Ganesh Sadhana sessions. And now this time we had the Durga Puja happening. So we had this pandal for 4 or 5 days, I don't remember. And we had this beautiful big, I will share the photo of the Ma Durga's icon. No, not icon. What is it called? The model. No, what is it called? Statue. Mansi, what is it called? Idol. What was that? Murti. Idol only, huh? Murti. And we had cultural event. Murti.
we had a cultural event, and the Indian school where my children studied, they had this beautiful depiction of what was it? Freedom is yet not there, something like that. I don't remember the exact word. And the way they depicted the whole play was like as if Gandhiji, along with his cabinet people like Subhash Chandra Bose and all of them, Bharat Singh and all of them. So that part, and then how the children hate history and how the teacher says, okay, we'll go to India and I'll teach you. So this is just saying a small thing about the play. And there was one part where they showed about how the women get raped and things like that. That was a very touching scene. I'm getting goosebumps even now. And there was one other part where they bring a coffin with a flag and they show how soldiers sacrifice their life to keep us safe. And it was very, very touching. And this is what, as Mansi says, that it's really beautiful that we live in Moscow and we experience and taste so many beautiful cultures. And it was just a wow feeling, a very wow feeling. And today we had Sindur Kela. Sadly, I couldn't attend it, but I'm sure that they'll put up some pictures and I'll post that. And that is also a lot of fun. And we have Aarti every day with Bhog, and it's all very happening. Thank you, Mansi. Shivo, how is this Kamalatmika energy? How is this Ma Chandra Ghanta energy? Is that people think this was the realization of the day. People that I am doing best for myself and I am making the best decision and I'm very practical, but actually there is so much hype about whatever decision they're making that they are not seeing the reality. And actually they commit a lot of mistakes. This is what a lot of people shared about their choices, the choices they are making. Like somebody said, should I leave the job and I start the business? And I can clearly see there is a lack of practicality. There is a hype about it. When I do business, I'll make so much money. You haven't even considered any sort of reality, right? So this is the dimension of value creation, which is about practicality. Make choices that are practical. Yeah. Okay. अच्छा अभी हम fourth day पे आते हैं. And so till now we have discussed. Make choices which are in harmony with who I am. Yes, self. This is the three dimensions of Stay self. clear of the choices which you are not, where you are just following the mass influence. Stay clear of that, because that is going to trap you. Third, make choices that are practical. Don't get hyped. So these are the three dimensions of value creation. There are three dimensions of how to make choices. Now there are total 9 dimensions, right? Yeah. Yeah. So we come to the second dimension, we come to the second part, okay? The next three. Acha, before we go any further, is this, we are doing the celebration differently this time with this kind of review and going into every day? Is this helping y'all? Is this type of thing helping y'all? It's Just let superb. us know. It's a superb idea. Really loved it. Okay, thank you, Yes, Kunjan. it is really wonderful. It is Acha, great. Thank you, Shobhaji. So I would like to थोड़ा नहीं go ahead, sorry, कौन बोल रहा था? But sorry, बाकी भी हाथ ऊपर कर सके कि अगर if this is helping them, and if it's not, then also that's okay. But if it's helping you, just put your hand up or put it in the chat. तो हमको पता चले कि इसको include करते हैं next time भी. Yeah, someone was talking. Let's go on. Yeah, Mansi Kunjan here. So actually, I was saying why it is helpful is because in celebration when there are new people, so we are sharing what happened to us. But थोड़ा सा छोटा छोटा insight उनको सुनने को मिलेगा तो they'll be more, it will be more relatable for them to the sharing of what the participants are saying. So true, Kunjan. और new participants की तो अलग बात है. मुझे भी ना वो consolidation हो रहा है मेरे लिए भी. Poonam, like literally I said the same word. I just saw her and like it came up, it popped up in the chat. Literally it is happening for me also.
है ना? तो thank you guys. तो अभी now we come to this word that which was so important. We come to the next set of 3, and the word is ecosystem. Okay. Or before I come to ecosystem or day 4 के बारे में, how many of you have figured out what are their ecosystems or now have more of idea of ecosystem? क्योंकि मुझे जानना है कि क्योंकि आई नो कि ये सब बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत हमें आगे जाना है. ओके साची, ओके राखी, ओके मनीषा, anyone else who has some idea more now about ecosystems than they did when they before these 9 days? कि either you know your ecosystem, कि बाबा ये मेरी फैमिली है, दिस इज माय ऑफिस, यानी ये एटलीस्ट आपको ये पता है कि चलो ये मेरे 3-4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स है. हाउ अबाउट यू अबनाज, शोभा जी, प्रीति, जया जी, पंकज जी, ज्योति, Yes, yes, it लखविंदर? was a total new concept. And definitely, at least this is clear that what is ecosystem is the way Shivo and you were explaining. Na, at least some idea is there, but a Some long idea way is to go. coming. A long way to go. Need more clarity. But yes, some idea is has formed. Some idea, and we will Some build on idea. this. Yes. Build on this. है ना? रोज हम Build on we it. will kind of, yeah, we will keep building on this. Build on it. और मैं तो बोलती हूँ कि हमको और प्रैक्टिस चाहिए रहेगी. You know, in this day of the sun, okay, sun is the leader. You know, sun is also the father who traditionally provided the leadership of the family. Is the source, you know, the source of energy. We looked into what is the composition of our ecosystem. Okay, कि क्या composition है ecosystem का. और मैं थोड़ा टीम को भी थैंक करना चाहूंगी कि इतना रोल प्ले किया है उन्होंने, जो हमारे जो टीम की जो इकोसिस्टम थी, जो कॉम्पोजिशन थी, whether it be Uttara who was helping us with, and you know there were so many other things also that happened which also I think is Shakti Sadhana. तो शिवो का बुक लॉन्च था. अगर यू नो अबनाज उसके कल्चरल इवेंट्स में जा रही है इस टाइम पे, अगर मनीषा वो 100 बच्चों को सिखा रही है ना, शी इज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज टू देम, तो ये सारे भी क्रिएशन ही है. प्रीति is when she gets entangled and gets clarity, her problem is shared by so many people, so many women in India, and maybe even men. So when she comes out of it, again there will be a creation. So want to really extend my gratitude to Abnaz, who was like a rock solid. Manisha was constantly engaging and inspiring and asking those questions. Same with Uttara, you know how she was. There are so many people, Rupali, Uttara, Manisha, Atin, they worked so hard on the launch, Vajanti. So it was so much that Neha helped me with the banner, and I could discuss in the Quanto entrepreneurship circles, how do I go about it with my booth. So there was so much activity. Rakhi and Suman and Atin were doing something in Nagpur. Not something, and they were doing the Mangal part in Nagpur, and that is also creation. So there was all this Shakti that was and Shivo also, there was another big takeaway that Shivo shared. This is the time to say yes in life. Okay, this is the time to say yes. Say, like, even if you're 100%, you get an opportunity, say yes. You feel you have no energy, Ma will give you extra Shakti. See, Ma is giving you Shakti during this time. And how do you imbibe that Shakti? You imbibe that Shakti by saying yes more and more and more and more to who you are. जब आपको शक्ति नहीं रहेगी, तब माँ नई शक्ति देगी ना. आप कर रहे हो, आपके पास शक्ति नहीं है, तो माँ देगी नई शक्ति. So this was another big takeaway by, like, you know, something by Shivo. Tachi, sorry, Rakhi, you want to say something? I see your hand up. आपको बताना है जो क्रिएशन हुआ. हाँ, Uttara made the creatives every day, है ना?
कि जो हम शक्ति साधना में हम रोज 2 मंदिर खोलते थे। एक था कि माँ नवरात्रि के माँ का, है ना, जो विजुअल उत्तरा बनाती थी, एंड देन द सेकंड थिंग वाज द महाविद्या। सो यस, उत्तरा एंड रूपाली वगैरह ने इतना काम किया ना लॉन्च के लिए। अबनाज, रूपाली, ये सब, मुकुल, ललित, मनीषा, अतिन, है ना, कुलदेव का काम चल रहा था, वो भी तो, वहां भी तो कितनी शक्ति थी। तो ये सारे शक्ति साधना के पार्ट्स हैं। यस राखी। यस, प्रणाम आंटी। वैजंती के सिवा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यस, प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। यस मानसी, लाइक नागपुर में भी जो हो रहा था, इट वाज शक्ति ओनली। बहुत ही टेरिफिक चीजें हुई। लाइक मैंने वो जो कल आपसे शेयर किया था एक फोटो, एंड यस, बट स्टिल लाइक सुमन, अतिन एंड आई ऑल्सो, लाइक हम लोग इसमें से लाइक निकले बाहर, बट स्टिल अभी उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। सुमन को भी बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो फेसिंग सम, लाइक मेरी चीजें ही आगे नहीं बढ़ रही है। एंड अतिन तो अभी बिजी है, तो अतिन से ज्यादा बात नहीं हुई, बट एवरीबडी इज फेसिंग, लाइक स्टिल फेसिंग वी आर। राखी, लेट अस, यू नो व्हाट वी कैन डू इज कि वहां जो ऑब्जर्वेशन, let us you know either do a अखंड दिया और discuss this in QSC, हम सब ऑब्जर्व करते हैं साथ में, या है ना, ये बिकॉज मे बी take up the case study in Akhandiya. या टेक अप द केस Now स्टडी इन अखंड। it's the क्या होता है format ना, of Akhandiya, where now we are taking up case study very often. So one person's case study we can take. So we can take your case study some of the day. राखी, मेरी खुद की इतनी सोल सर्चिंग हुई है ना, जो टीम को पता है कि आई एम लाइक ये अलग लग रहा है, और कभी कभी अलग लगता है ना तो हमको लगता है बुरा हो रहा है, क्योंकि पर वो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन रहता है कि आई वॉज सोल सर्चिंग सो मच कि माँ आपने मेरा साथ छोड़ दिया है क्या, कि क्यों, क्योंकि मैं जो देख रही थी ना, मैं उसको खुद से इंटरप्रेट कर रही थी, है ना। मैंने बोला कि क्यों क्यों जब हम चालू करते हैं सिर्फ 7-8 लोग होते हैं, क्योंकि क्यों क्यों मैं क्या गलत कर रही हूँ, कि ये क्यों हो रहा है। वो शिवो बता रहे थे कि पापा ये देखो ये देखो, बट ये ना मुझे नहीं समझ, मेंटली समझ रहा था, पर फिर भी ना वो एक मेरे मन में एक था कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आज मुझे, और कल रात को ना मुझे एकदम मीन्स देयर वाज लाइक फुल ग्रैटिट्यूड कि पापा नहीं, ये जो हो रहा है वही ठीक है। और आज मुझे इतना, शिवो मैं बता दूं आपको, मैं आज नहाने को जा रही थी अभी, यानी मैं चालू होने के 15 मिनट पहले गई रहेगी मैं नहाने को, ठीक है। और जब मैं जा रही थी ना शिवो, मुझे वो पूरी जो बुक और उसके कार्ड्स, जो सृजन तंत्र के, लाइक 1 सेकंड में पूरा दिख गया। लाइक ये भी नहीं है कि मैं सोच रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं ऐसे 10 महाविद्या के कार्ड्स, 9 नवरात्रि के कार्ड्स, 9 महाविद्या के कार्ड्स, 9 प्लैनेट के कार्ड्स, एंड इट्स नॉट इवन oracle or a tarot, it's just a book, and I am seeing all these inquiries, everything is just like making sense, and it happened in 1 second. There is no thinking कि ये फिर nothing, 1 second, everything is just there, and it just happened. I am वो पूरा और मैं इतना स्ट्रगल, मैं तो ना, मैं 3 साल की थी ना, तब मैं गाना गाती थी माँ के लिए कि अम्बा मेरे साथ खेलने को आओ, अब मुझे नहीं आता खेलने को, आप जैसा खेलोगी वैसा ही मैं खेलूंगी, और अगर आप नहीं आए ना तो ये आपकी भूल रहेगी, हाँ, क्योंकि मैंने बुलाया और आप ना आए तो ये आपकी भूल है। मैं 3 साल में गाती थी, तो मैं वही गा रही थी कि आप लिरिक्स ऑल्सो सो चाइल्ड लाइक ना, कि अम्बा आओ तो रमिए, माँ मने रमता ना आवड़े, यानी मुझे नहीं आता है, माँ मने रमी ने देखाड़ो, एंड देन एंड में ये भी है कि मैं बोलावी तू ना आवी, इट्स नॉट इवन तमे, इट्स तू, कि मैंने बुलाया तू नहीं आई तो ये तेरा ही वाक है। तो ये मैं बहुत गाती थी 3 साल में ना, मैं ऐसे कि मैं बोलावी तू ना आवी एटलो तारो वाक, यानी ये तेरा ही तेरी ही गलती है। ये जो, एंड व्हेन समवन ऑब्जर्व्स ना कि बाबा यही है क्योस, यही है जर्नी, तो इसमें इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ओके, सो मानसी, डेफिनेटली क्रिएशन तो हो रहा है जो भी क्योस हो रहा है, बट क्रिएशन इज देयर। so let us so pick up a day, है ना। अभी
अभी वी आर कंपैरेटिवली वी आर ऑल रेडी टू बी ऑब्जर्वर्स, तो अभी आप पिक कर लो एक दिन, ठीक है? ओके अच्छा, अभी ये भी अभी ना सब क्वेश्चन है ना इकोसिस्टम के हुए कि मेरा जो गोल है वो रेलेवेंट है क्या मेरे इकोसिस्टम में, ठीक है? अगर मैं कुछ नया कर रही हूँ, सो एम आई एडिंग टू द इकोसिस्टम? शिव, आप क्यों हंस रहे हो? आप क्या है क्या? मेरा बहुत शॉकिंग रियलाइजेशन था, मैं तो ऐसा अज्यूम करके चलता था इकोसिस्टम तो सबको पता ही रहेगा, ऐसा मेरा था कि कोई भी बिजनेस का को सोच रहा है तो पहले तो इकोसिस्टम को ही देखेगा ना। बट माय शॉकिंग रियलाइजेशन वाज कि आई एम वेरी सॉरी टू से कि लोगों को नहीं आइडिया व्हाट इज इकोसिस्टम रियली। और अगर आपको इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज योर इकोसिस्टम, what is the character of your ecosystem, what is your role in ecosystem, what you can do better, how you can drive it, ये अगर आपको समझने, हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस लीडरशिप कुछ भी नहीं हो सकती। लीडर वही होता है जो इकोसिस्टम को समझता है। तो मुझे लगता है कि जो तीन जो हमारी डायमेंशंस थी कि सेल्फ, इकोसिस्टम एंड द होल, उसमें सेल्फ लोगों को मालूम है, होल भी मालूम है, लेकिन ये जो बीच वाली स्टेज है ना इकोसिस्टम, ये लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए लोगों की लाइफ में ये जो होता है ना कि हम ड्रीम करते रह जाते हैं लेकिन अकम्प्लिश कुछ नहीं होता है। मेरा ये बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ कि इट इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इकोसिस्टम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को समझना। या मानसी प्लीज। So yeah, this was day 4. Day 5 was Ma Tripura Sundari. And this was कि अच्छा इकोसिस्टम में ना, आई थिंक कि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, तो हमेशा मुझे यही आता है कि मुझे ना अगर मैं कंफ्यूज अगर होई ना कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, ऑलवेज थिंक कि पापा सीड है, सीड को, प्लांट को ग्रो करने में क्या क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, उसको राइट सॉइल चाहिए, उसको राइट टेम्परेचर चाहिए, यही उसका इकोसिस्टम है। मुझे क्या चाहिए फ्लरिश करने के लिए, है ना? और कुछ कुछ चीजें दी जाती है। If you don't know what is ecosystem, at least know that your family is your ecosystem. You're just born into that. If you're working, that is also an ecosystem. If you have a friend circle, that is also ecosystem. Just like Abnaz is associated with all these cultural events, that is also, that is also ecosystem. तो ये सारी चीजें ecosystem है. But now we go to कि माँ त्रिपुरा सुंदरी जो मून की एनर्जी है, जो sun was Kushmanda, now we have Skanda Mata energy. So who are the significant people in your life? In this ecosystem, who are the yes, Quanto Life is ecosystem. Thank you, Avnas. Or who are the significant people? Who are the influential people? Are you able to spot this in your ecosystem? Maybe in the family, maybe it's your mother, maybe it's your father, maybe it is that uncle जिसका सब कुछ सुनते हैं लोग. And also to find people who resonate with your vision in life, resonate with who you are. So these two types of people. तो किसी ने आइडेंटिफाई किया ये अपने लाइफ में, या कि ये सिग्निफिकेंट पीपल कौन है? किसी की ये सोच, anyone was thinking? And I call upon other people also to. राशि, आपको कुछ बोलना है? हितेश, हाय हितेश. Dinesh, Lakwinder, any sharings? Even for the people I didn't take the name. Yes, Pankaj ji. मानसी जी प्रणाम। Pranam, Pankaj ji. एक्चुअली साधना मैंने अटेंड कर रहा था, लेकिन ये बहुत फर्स्ट डे तो जो केओस रहा ही, और 2 दिन मैंने अटेंड किया। थर्ड डे मेरे बॉस आ गए यहाँ पे, 2 दिन उनके साथ चला गया, अटेंड नहीं कर पाया मैं। फिर बीच में अटेंड किया, 1 दिन 2 दिन फिर अटेंड किया, फिर इंतजार करते करते एक दिन सो गया। एग्जैक्ट अखंड दिया के टाइम पे मेरी नींद खुली, अखंड दिया
इन्वोकेशन ज्वाइन कर लिया, बस इन्वोकेशन स्टार्ट हो रहा था, इन्वोकेशन तो बहुत मैं उस प्रकार से कर नहीं पाया जैसा हर साल फुल टाइम अटेंड करता था। तो लेकिन इसमें मुझे जो लगा कि मुझे मेरे अंदर कुछ इमेजिनरी माइंडसेट्स है, या कहना चाहिए कुछ भी चीज मैंने इमेजिन कर रखा, आई हैव टू बर्न दैट थिंग। मैंने अगर किसी के लिए कोई चीज सोचा है कि ये आदमी ऐसा है और ये इस प्रकार से कर रहा है, देन आई हैव टू बर्न हिम। तो इमेजिनेशन को इमेजिनरी फायर से ही मुझे बर्न करना पड़ेगा, या इमेजिनरी सोर्ड लेके उसे काटना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन गेट रिड ऑफ दैट माय पैटर्न और एनीथिंग। ऐसा एक थॉट इस शक्ति साधना के दौरान जो है मेरे अंदर ये इनवाइव हो गया अचानक से, और लास्ट 3 डेज से ये चल रहा है। उसके अलावा जो एनर्जी बिल्ट हुई उसको मैं कैसे डे टू डे लाइफ में यूज कर पाऊं, ये भी चल रहा है। पुराने पैटर्न ऐसे क्या है जिसको मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूं, वो सारा भी चल रहा है मन में कि हाउ आई कैन am I ready to release all those pattern which are not serving me, or any energy which is not serving me, और कैसे मैं और लोगों के काम आ सकता हूँ इन द सोशल लाइफ और इन माय इकोसिस्टम, इन माय ऑफिस और एनीवेयर, टू हाउ आई कैन हेल्प देम अदर पीपल टू ग्रो। तो such type of things are getting inside me. वंडरफुल वंडरफुल पंकज जी, ये आई एम सो लाइक रियली आई एम जस्ट रियली थ्रिल्ड, रियली रियली थ्रिल्ड। अभी ये एग्जैक्टली यही है ना, ये जो महाविद्या, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी की यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ईच पर्सन, ईच इंडिविजुअल, और उसमें ना एक इंटॉक्सिकेशन फील होता है, एक ब्लिस फील होता है ना। हम जब किसी के यू नो किसी के लाइफ में वो करते ना, वो भले ही उनका शायद वर्ल्डली गेन हो रहा है, बट जो इंटॉक्सिकेशन हमें होती है ना, उसकी जो ये होती है। और राशि को भी कुछ कहना है, और मुझे आई डोंट नो इफ टीनू एंड उत्तरा आर हियर बिकॉज दैट जोरबा आल्सो आई फील। हाँ हाँ पंकज जी। 2-3 दिन पहले क्या कुछ किसी स्टाफ को मैंने कुछ काम बोला, उसने किया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोले इसको अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। फिर उसी समय मेरे को थॉट आया कि तू है कौन यार, इसको तू क्या बताएगा। सेम एग्जैक्ट सेम टाइम में दोनों थॉट आए किया तो एकदम कि ये अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ, फिर ख्याल आया यार मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, मैं इसको क्या बताऊंगा। और मैं मैं इसको अब मैं इतना ऐसा ही हंसा मैंने, मैं अकेले ही मैं और एक्चुअली इसमें बताना है, इसमें गुस्सा की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। आप हंसिए खेलिए, उसे बताइए मैं कौन हूँ, इसमें गुस्सा क्या है। उसी समय जो है सारा गुस्सा गया, और मैं तुरंत पलट के पीछे पलट के मैं हंसा, ऐसे ही मजा आ गया पंकज सुन के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राशि आप और उत्तरा भी आ जाइए, आप भी अपना अपना। हाँ राशि या उत्तरा, जो कौन आपने मेरा नाम लिया तो आई जस्ट सेड आई एम हियर। हाँ उत्तरा, एंड आई डोंट नो इफ टीनू इज हियर। उत्तरा, कैन यू गेट टीनू आल्सो, वी शुड टॉक अबाउट जोरबा किचन। शिवो, टीनू है क्या? हाँ आप दोनों आइए, आप दोनों शिवो, ये जो जोरबा किचन का जो क्रिएशन हुआ है। शिवो, इज शी अराउंड, इज शी बिजी? टीनू नहीं यहाँ अभी नहीं है, हाँ शायद बिजी रहेगी। हाँ ठीक हाँ, है। उसका शूटिंग चल रहा है आज। अच्छा शूटिंग चल रहा है क्या? ठीक है। हाँ so I think Rashi okay, so Shivo, Uttara, do you all want to talk about the Zorba kitchen and this, and then we listen from Rashi also about this? Shivo, ये कैसे हुआ? टीनू का she came up with this, like ये सब बात चल रही थी, ये सब अब कैसे वही हुआ? चल ही रहा था उस समय कि ये करते हैं वो करते हैं। अब मैंने कहा कुछ नहीं है, बहुत बातें कर ली, अब करो बस ये। अच्छा करो। उस दिन तो ध्यान ही है। हाँ दैट डे वेरी इंटरेस्टिंग डे, इफ यू रिमेम्बर।
कि वही सब टीनू एक नया आइडिया लेके आई थी कि मैं सोच रही हूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन स्पीकर बनूंगी मैं। वो बताओ जरा, बताओ, हाँ बताओ जरा मानसी, जरा शेयर करो। फिर हमने उसको क्या बोला, सडनली उसकी इतनी जबरदस्त बात समझ में आई, तो उसके सारे डाइवर्जन उस मोमेंट पे ही खत्म हो गए। जितने वो उसके सब माइंड इधर उधर भटक रहा था ना, वो पूरी इंसिडेंट बताओ आप, क्या हुआ। हाँ नहीं, ये बात मुझे मुझे ये तो एकदम याद आ रहा है कि वो सब लोग बोल रहे थे कि हु दे आर, और उसने बोला कि मैं ना मुझे ना मोटिवेशनल बोलने को बहुत अच्छा लगता है, और दैट इज हु आई एम, राइट? कि मैं ये सब मैं लोगों को बोलूंगी, और रील बनाऊंगी, रील रील हाँ, बनाऊंगी। रील बनाऊंगी, वीडियो, बनाई भी है फिर उन्होंने, बहुत सारी बनाई है। हाँ हाँ बनाई है, और कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी और फेसबुक पे डालूंगी, है ना, और वो ये प्लेस भी आते हैं, और मैं इस पे बात कर सकती हूँ, उस पे बात, और मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक कि वो जो शिवो ने वो जो बबल बर्स्ट किया है ना सब लोगों का, कि यार जस्ट बिकॉज ये हमको अभी इंटरेस्ट आ रहा है और ये सब कर रहे, डजंट मीन दैट इज हु आई एम। एंड व्हाट पीपल आपको किस चीज के लिए जाते हैं, कि मैं बोलूंगी कि मेरे मन में मैं हूं क्वीन ऑफ सैन मार्कोस, बट हाउ आर पीपल परसीविंग मी, राइट? दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सी ये सब आई इकोसिस्टम की ऑल्सो बात। टोल्ड यार कि बड़ी प्रैक्टिकल बात मैंने उसको बोली। मैंने कहा आज जब तुमको सब लोग जानते हैं एज अ शेफ, राइट, एज अ वंडरफुल कुक, तो आज तुम कुछ भी करती हो तो तुम्हारे पास 500 एम्बेसडर अवेलेबल है राइट नाउ। यू हैव 500 एम्बेसडर्स। मैंने कहा तुम ये मोटिवेशन वीडियो बनाओगी, तुम मुझे बताओ कौन है जो ये कहता है कि हाँ यू आर अ मोटिवेशन कोच। कोई तुम्हारा वीडियो प्रमोट करेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारे क्या बारे में बातें करेगा? सी, उस दिन ये पॉइंट निकल के आया कि अगर आपका ब्रांड नहीं है, अगर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो आप बिल्कुल, पहला काम तो आपको ब्रांड क्रिएट करना है, तब कुछ करने की सोचो आप। Just और अगर because you want to ब्रांड, do it and you don't have the brand, you cannot do. see if that brand word seems too big, na, just think कि when people think about you, what's the first thing they think? What is the first, second, third thing? Like, when I go into the community, when they see Mansi, this is what they think. And the first thing you can do is something around that. Then you don't have to fight their perception on who you are. Okay, when people see me, if they are seeing that she is someone who talks about meditation, that's what the post she puts up. She puts up the tarot post, then that is already how people are thinking about me. Then it's very easy to do something in that sphere. People have benefited also, उस तो वो उस आके moment मिलते भी हैं। उसके मेरे ख्याल से सारे जो डाउट्स थे, वॉन्डरिंग थी, एवरीथिंग गॉट बस्टेड, हाँ, जस्ट केम बैक टू, बबल बर्स्ट, टप 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 और टप टप, उसी को क्रिएशन हो गया सारा का सारा। and then this Zorba, फिर वो Uttara, आइडिया you आ गया, पहले वो know आइडिया आया that तो also? पार्टीज में मैं Yeah. खीर भेजती हूँ। फिर मैंने कहा यार किटी पार्टीज में भेजो जरूर, पर वहां तो अपना बुक लॉन्च होने जा रहा है, दैट इज अ कम्युनिटी विच इज मोस्ट रिसेप्टिव टू यू, तो वहां पे आगे करो सबसे पहले कुछ। देन सी, हाँ मैं सबके लिए खीर बना के ले जाती हूँ। तो उसने 75 लोगों के लिए खीर बनाई, लेके आई, हम लोगों ने सब मैनेज किया उसको, तो जिसमें ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे थे, बट एवरीथिंग गॉट मैनेज। फिर उसका कार्ड, मैंने बोला यार कार्ड रखो, उसने भी बोला कार्ड। मैंने उत्तरा को पूछा, उत्तरा यार बना सकती हूँ क्या कार्ड? तो उत्तरा ने फटाफट, मतलब भूख उत्तरा भूख आ जाओ भूख, उत्तरा मैदान तो में। हमारी तो वो तो सुपर फास्ट, एकदम राजधानी। कार्ड बना डाला। और उसके बाद टीनू ने दूसरी जगह भी रखा खीर, अपनी एक जगह अगले दिन फिर रखी कहीं पर। वो वहां से रिव्यूज, रिव्यूज वो बताओ। बहुत सारे लोगों ने अभी इंक्वायरी की है उससे अभी, कि अभी क्या क्या आप बनाती हो। तो आई थिंक शी इज गोइंग टू, आई स्पेशलाइज इन फ्यू आइटम्स, जो ये अपना जोमेटो क्लाउड किचन, तो उसने तो बड़े बड़े सब मंगा के रखे हुए खीर बनाने वाले, जिसमें एक साथ में 10 15 15 किलो खीर बन सकती है। बहुत बड़े बड़े बर्तन उसने मंगा के रखे हैं। तो मैंने यही कहा कि यू ट्राई एवरीथिंग, डोंट मेक डिसीजन, ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, सी वेयर यू आर काइंड ऑफ रियली गेटिंग एब्जॉर्ब। आप ये देखो कहाँ आपको सबसे ज्यादा आप एंजॉय कर रही हो, कहाँ से कितना क्विकली क्या मूव करता है, तो उस सब के बेस पे, सो डोंट मेक
डिसीजन वेरी क्विकली। मैंने कहा आराम से 6 महीने लो, आराम से डिसीजन मेकिंग के लिए भी, बिकॉज द डिसीजन हैज टू बी राइट। कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है अपनी पूरी एनर्जी को, दैट हैज टू बी अ राइट डिसीजन, राइट चॉइस, है ना? या प्लीज। Uttara, can you send me the card again? I will see if I can display it. या आप शेयर कर दो जो भी। तो अभी अब मेरे को ये इस बात की बहुत खुशी है कि क्वांटो लाइफ एक ऐसा इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है where people are supporting each other in launching their dreams. I mean, giving practical shape to whatever they have been dreaming. तो यहाँ अभी ये अलाउड नहीं है किसी के लिए कि बस ख्वाब देखते रहो, फिर अच्छे से झटके पड़ेंगे इधर। ख्वाब देखना अलाउड नहीं है। आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, समझिए। यस, यू नीड टू ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बट यू गॉट टू बी इन दैट इंटेंशन, और बस मौका आया आप कर डालिए। गाइस, आपको दिख रहा है कार्ड? ये बना है उत्तरा, दिख रहा है कार्ड? Yes, yes. तो ये बनाया हमारी उत्तरा ने, एकदम अल्ट्रा क्विक। थैंक यू सो मच मैम। वो दिन वैसे भी काफी काम कर रहे थे मैं और वो, आई थिंक फॉर द बुक लॉन्च ना कुछ कुछ बना रहे थे, तो बना के दे दिया। देन आफ्टर, थैंक यू कुंजन। सो उसके बाद वही वही मैसेजेस में कैन यू मेक अ विजिटिंग कार्ड फॉर टीम, नाम दिया और नंबर दिया, बस हो गया। आफ्टर इट्स लाइक वी विल गेट ऑन टू द कॉल, आई सेड गिव मी 2 मिनट्स, और 2 मिनट में मैंने बना के 2 भेजे थे मैंने, जस्ट 2 मिनट्स टू। Thank you, Pankaj. Thank you so much. And I just, it was like so, मस्त लग गया ना मेरे को भी बहुत। I was like, wow, मस्त बन गया करके, वो फीलिंग आती है ना, अच्छा बन गया करके। तो even Shivo loved and Tinu also loved. Tinu was like, अरे 10-10 दिन लगाते हैं लोग क्रिएटिव बना के देने के लिए, तो 2 मिनट में बना के दे दिया करके। मैंने बोला वो टाइम नहीं था, मैंने बोला फटाफट बना के दे दूं, बिकॉज पता है लॉन्च के लिए वो चाहिए था कार्ड। Thank you, Noemi. Thank you, everyone. Thank you, Manisha. Thank you, Shivo. Thank you, Mansi. राशि ने भी हाथ ऊपर किया था, बट आई वांट टू शेयर नेहा ऑल्सो। नेहा ने बहुत सुंदर बैनर बनाया था मेरे लिए, and I think I will be using it again and again in all the booths I have. Right now, I probably have one more opportunity to do a booth in this month, so we will. वो नेहा का भी ना उसने बुक डाला था, so but poor thing she didn't have the pro, and I was like, can let's just help you, and you send the link in our group. I just picked up, I made some changes, I sent it to her, like चुपचाप तू करवा देना, is don't get into it. I just made the changes and I gave it to her. She like, thank you यार, तूने बना के दे दिया। और मजा आ गया करके। Also, this is yes, Kunjan. Thank you for reminding. This is Sinduri Ma is एक बार हम जब इन्वोकेशन, मुझे याद नहीं क्या था, हमने इन्वोकेशन किया था, yeah, during Ganesh Sadhana. So this is a goddess that came to me, and I will be invoking her the coming Friday for the first time in Akhandiya. So लास्ट डे ना गणेश साधना का, शायद लास्ट डे ऑफ गणेश साधना का शायद लास्ट डे, या हाँ गणेश साधना का ही था, मुझे याद नहीं कौन से दिन पे, but she came and yeah. So I'm going to invoke her the first time on Friday in Akhandiya. So I invite you all. Kunjan, actually राशि का हाथ ऊपर था। राशि, आप हो यहाँ पे? हाँ जी, आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं थोड़ा ही बोलूंगी। Actually, I slept off. Day was very tiring and just woke up. So not much is coming, but the main thing which was very useful for me, I mean, each and every day was so connecting and full of stress. But मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। Is it okay? Yeah, it's okay. I want you to be comfortable. अगर कर सकती हो तो कर लो, नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मैं नहीं कर।
So, my the best thing which came to me via the discussion, मैंने एक scenario present किया था, and in that I this input कि you have to free up yourself from present thing, then only the higher thing will come to you. So that was a great thing. And then हम लोग ecosystem की बात कर रहे थे, where you have to understand your ecosystem, not only ecosystem, the stakeholders. You have to understand your who am I, as well as the people who are your stakeholders, their who am I also. So which is so valuable. मेरे लिए वो बहुत key thing था. So कि और इकोसिस्टम में उनका भी who am I है ना, influential people का भी who am I है ना, not just our who am I. हाँ. Significant people. Yes. And राशि एक चीज आई थी आपके लिए कि आई थिंक वो डे 6 या था, हम ये भी पूछ रहे थे कि हम ये भी बात कर रहे थे जो बहुत लोगों के साथ होता है कि at some time they feel that they have Shivo, how do you put this, that they are peaking at 40 और उसके बाद क्या, उसके बाद मैनेजमेंट सोच रहा है कि मुझे वी कैन गेट समवन विद whom we can pay less. ये इश्यू का क्या नाम, हम कैसे इसको, जो मैंने लंबा बोला उसका फ्रेज क्या है? बर्नआउट इन 40s. बर्नआउट नहीं होते, पीक आउट होते हैं. बर्नआउट तो ठीक है, पीक आउट हाँ है ना. तो ये भी प्रॉब्लम राशि ने इसके बारे में भी जिक्र हुई थी. एंड वही जो से बात हुई थी वो इसी में आई थी क्या, शक्ति साधना में? That why do we kick out, नहीं वो मेरे ख्याल से उसमें आई थी, गणेश साधना में आई थी. गणेश साधना में पहला उसका बात हुआ था, बट अभी हमने और भी किया कि how you that you have to always have a plan to go into a larger ecosystem. Right? ये बात डिस्कस की थी और राशि को भी बोला था ना, you have to start becoming the stakeholder. If this is who you are, है ना राशि, याद है आपको? Yeah. If this is you, who you are, then you integrate the who am I of the boss and you become a bigger stakeholder in this. So, yeah, and you, this one, yeah, go ahead. And you free up from the other, low-end jobs, so that you get free for better tasks coming to you. Yeah, time management. नहीं, वो टाइम अबेंडेंस का नेक्स्ट डे पे आएगा शिवो, डे 7 पे आएगा. तो हम ये अभी हम डे 6 पे हैं. डे 5 के मून के एनर्जी में मैं ये भी बोल दूंगी कि पंकज जी हैज रिटन 4 new poems for during Shakti, and we all have a vision and for him कि उनके भी बुक्स, उनके ये जो बहुत जो एकदम ये वाले रहते हैं ना, खोजागिरी रात वाले, वो सोमा वाले जो उनके पोएम्स रहते हैं, वो जरूर दे ऑल्सो कम इन प्रिंट. ये हमारा आई थिंक हमारे बहुत लोगों की लॉन्गिंग है. सो पंकज जी, and then we come to day 6, and Kunjan, I'll call you in a minute, but day 6 is really about कि कुछ क्या ग्रज है हमारे क्या ग्रजेस है, हमारा क्या कंपटीशन है इकोसिस्टम में. Are we the kind of people, by the ecosystem, victim of the system? Are you a puppet in the ecosystem? Do you feel like a victim in the ecosystem? Are you bullied by a ecosystem? And do you have a plan to go to a larger ecosystem? नहीं तो ये ecosystem एक दिन stagnant होना ही है, एक दिन गला घोटेगा ही, if you don't have a plan to go to the next ecosystem. No, it may not be larger ecosystem, it's a newly emerging one. It's an alternate ecosystem which is now emerging. और पंकज जी, मुझे जो अभी 1 मिनट जो अभी आपने बोला ना sure I do, तो मुझे क्या आया कि श्री की पेंटिंग्स और आपके पोएम्स, ये जैसे आपने लिखा ना श्योर आई डू, इसमें मुझे ये दोनों दिख गए ऐसे. रियली चलिए प्रयास कोशिश करेंगे. पंकज जी, कोशिश नहीं, आप ना QEC में एक स्लॉट लो और आप ये डिस्कस कर लो, ठीक है? वरना वो मानसी, मैंने जस्ट अभी चैट में डाला कि फर्स्ट सेलिब्रेशन वेयर वी हैव नॉट हर्ड हिज पोएम इवन वंस. चलो वो भी हम वो भी कर लेते हैं हम.
है ना? पंकज जी आपको बुलाएंगे, आप पोएम एक रेडी रखो हमको सुनाने को, ठीक है? ठीक है अभी आपको ठीक है। बुलाएंगे। कुंजन तो का मुझे माँ लगता है हाथ दिख गया है, तो मैं कुंजन को बुलाती हूँ। माँ कात्यायनी वाली पोयम सुनिए पंकज जी फिर से मुझे प्लीज। अरे यही डे 6 वाला ही चल रहा ठीक है। है आज पंकज जी, वही आप डे रेडी हो तो 6 वाले सुनाइए। कह आज रही हूँ, वही वाला कह रही हूँ कि वो सुनना है मुझे, पोयम सुनाओगे तो प्लीज। आज उसमें कुछ लाइनें मैंने जोड़ी और मुझे वो लगा कि अब वो कंप्लीट हो गया। और ये अच्छा सुना दो अभी। सुना दो। यस यस। अभी हाँ हाँ कर दीजिए। कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी। आज ही तो सेलिब्रेशन है, अब ये डे 6 पे ही है हम एग्जैक्टली। धूमावती जी आए उसके पहले कर लीजिए आप। 10 भुज सूल धारिणी, 10 भुज सूल धारिणी, त्रिशूल धारिणी माता, दुख हारिणी सुख करनी, दुख हारिणी सुख करनी, महिषासुर मर्दिनी, सिंदूर विराजत कानन में कुंडल, सिंदूर विराजत कानन में कुंडल, उज्ज्वल से दो नैन, उज्ज्वल से दो नैन, कात्यायनी भव भय मोचनी, कात्यायनी भय भय, कात्यायनी भव भय मोचनी, तू परमेश्वरी माता, तू परमेश्वरी माता, दुष्ट निशाचर पाप विध्वंसनी, दुष्ट निशाचर पाप विध्वंसनी, दुर्गे दुर्गति नाशनी माता, दुर्गे दुर्गति नाशनी माता, चंडास्त्र धारिणी धारिणी, चंडास्त्र धारिणी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैल सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैल। थैंक यू। ये पंकज कंप्लीट जी हो गया। वंडरफुल। वंडरफुल। कुंजन आप कुछ बोल रही थी, आपका हाथ बहुत टाइम से था, फिर हम डे 7 पे जाते हैं। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से कौन से डे का था। नहीं और नहीं इट्स मुझे जो भी शेयर करना है ना। एक्चुअली मुझे एक बात याद आ रही थी जो आप बोल रहे थे उस पे से, कि जब हु आई एम मैचेस विथ हाउ द वर्ल्ड सीज यू, हु यू आर, इफ दीज टू मैचेस देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ऐसा एक मुझे याद था। सो या ये मुझे बहुत ही वो लगा था, मतलब पंच कहते हैं ना, मस्त सा वैसा पॉइंट। सो एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन टीनूज केस ना, कि वो यस पूरी बाउंड्री उसकी यस, बंद हो गई उसके बाद, है ना। हाँ ट्रू, वेरी ट्रू। आई रिमेम्बर मेरे ख्याल से जया जी ने बोला भी था, एंड शी वो सेड दैट व्हाट यू हैव एसेट्स यूज देम, बी प्रैक्टिकल टू यूज योर एसेट्स। आई रिमेम्बर वो आपके डेक्स के लिए भी बोला था। ऑल योर टैरो डेक्स, ऑल दैट थिंग्स जस्ट कमिंग टू मी। वंडरफुल। तो अभी हम डे 7 को जाते हैं। डे 7 का कुछ ज्यादा ही असर हो गया था माँ धूमावती का। कहीं उसके बारे में बात करते करते कुछ दंगा वंगा ना हो जाए।
तो माँ धुमावती का है ना उनका धूम धड़ाका था और और एक्चुअली वो स्टार्ट तो एकदम यानी इन्वोकेशन के पहले या उसके पहले तो सब ठीक ही जा रहा था. शिवो ने लिखा था टाइम अबेंडेंस का. शिवो, इफ यू ब्रिंग दैट इन एंड देन आई डोंट नो इफ प्रीति wants to talk. Preeti wants to talk about it, and then if Atharva is there, he can also, and others can also talk. But Shiva, आप बताइए आपके टाइम अबेंडेंस के बारे में. हाँ, टाइम अबंडेंस भी मुझे मतलब उसमें क्योंकि तभी हाँ, शुरुआत तो बड़ी सही हुई थी, एकदम राहु टाइप थी. शुरुआत तो पूरे बैंक के साथ हुई थी हाँ, और फिर वो तो जो घूमे हम. टाइम अबंडेंस में जैसे 80-20 का रूल रहता है कि हाँ. 20% ऑफ योर टास्क क्रिएट 80% ऑफ द वैल्यू. तो टाइम अबंडेंस का 20% required to create 80% of the task. Yeah. Right? नहीं, उसमें 80-20 का रूल हर जगह रहता है एक्चुअली. हाँ, हर डिमेंशन पे 20% ऑफ द टाइम, जो पूरी 100% का टाइम लगेगा ना टास्क करने में, उसमें 20% ऐसा टास्क है जो करने से आपकी 80% वैल्यू क्रिएट हो जाती है. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है कुछ समय से, उस दिन मुझे बहुत क्लियर, कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से चल रहा है, आउटपुट टू इनपुट रेशियो. हमेशा मैं बात करता हूँ कि जब भी आप चॉइस करो तो लुक एट द आउटपुट टू इनपुट रेशियो ऑफ दैट, एंड whatever is the wherever is the highest ratio, that's what you do. But that day suddenly what happened, it got connected with time abundance. कि जैसे हम कहते हैं ना कि मनी अबंडेंस होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है ना. सो आई रियलाइज कि मनी अबंडेंस से ही काम नहीं चलता है, टाइम अबंडेंस भी होनी चाहिए. एंड देन आई रियलाइज कि इस दुनिया में जितने ग्रेट लोग हैं सबका टाइम अबंडेंस रहता है. आप उनके पास जाओगे ना कि कुछ प्रपोजल लेके कुछ मीटिंग करने के लिए, वो ये नहीं कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, ये कभी नहीं कहेंगे. अगर आपका प्रपोजल वैल्यूबल है तो आपको टाइम मिलेगा. दे आर असेसिंग कि आपके प्रपोजल में कुछ वैल्यू है, कुछ पॉसिबिलिटी है. वो इस पेस में नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है. तो उस दिन ये भी डिस्कस किया कि इसमें कितना बड़ा ईगो लोगों का रहता है जब ये बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम जस्ट वेरी बिजी. और मैंने एक से एक फालतू लोगों को ये स्टेटमेंट बोलते हुए बोला है, देखा है मैंने कि आई एम जस्ट वेरी बिजी. और एक्चुअल में जो 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 एकदम क्रेसेंडो वाले लोग होते हैं ना, एकदम क्रीम, उनको मैंने ये कभी कहते नहीं सुना है मेरे पास टाइम नहीं है. उनसे आप कुछ बोलो तो बोलेंगे हाँ ठीक है, बताओ प्रपोजल जरा भेजना फिर मैं देखता हूँ. राइट. तो द टाइम अबंडेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑल द टाइम यू हैव द होल टास्क अवेलेबल टू यू, क्लियर टू यू, और उसमें से जो हाईएस्ट आउटपुट टू इनपुट रेशियो वाली टास्क है उसको आप चूज करते जाते हो. बस हाईएस्ट, तो हाईएस्ट चूज कर लिया, बाकी नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, देन यू आर इन टाइम अबंडेंस. आपका ये अदरवाइज क्या रहता है, हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, हम ऐसे ना लिस्ट बनाते हैं पेंडिंग टास्क की, पेंडिंग 20 टास्क लिख ली. अगर एक दिन उसमें होती तो 4-5 है, फिर उसमें और जुड़ जाती हैं, उसमें 10 टास्क और जुड़ जाती है, तो वो लिस्ट बढ़ती रहती है. एक दिन हम पगला जाते हैं और हमको ऐसा कुछ भी काम करते तो मन ही नहीं लगता उसमें, क्योंकि 15 टास्क और पेंडिंग है, तो मन कहाँ से लगेगा, है ना. बट द मोमेंट द टाइम अबंडेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि द मोमेंट यू क्लियर कि ये टास्क पेंडिंग है और इसमें हाईएस्ट आउटपुट टू इनपुट रेशियो इस टास्क में, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली फोकस हो गए, आप टोटलिटी से उसी में इन्वॉल्व हो गए. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अबंडेंस. और ये बिल्कुल सक्सेस का, अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी बिताते जाओगे, दैट यू कीप चूजिंग द टास्क ऑफ very high output to input ratio, you will have a fabulous life. Not just success, but in terms of enjoying life, family life, everything. This concept applies everywhere, everywhere. हाँ, ये था हमारे कॉन्सेप्ट्स. फिर अभी एक्सपीरियंसेस सुनते हैं लोगों के. एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा शानदार है, अभी जरा एक्सपीरियंसेस. प्रीति, आप कुछ बोलना चाहोगी? और भी लोग हैं. वो धूमावती ने रूप दिखाया, मतलब ब्लैक होल वाला जो टाइम को ही खा जाती है. अच्छा, टाइम अबंडेंस, टाइम पे खाता भी. मतलब आई विल थ्रो समथिंग कि तुम जितना आउटपुट टू इनपुट कर रहे थे ना, काम खत्म, छोड़ो बड़े आउटपुट, जस्ट कम हियर,
मैंने बॉम्ब मैंने फेंक दिया बस, अभी काय का आउटपुट टू इनपुट। टाइम बॉम्ब आ गया वहां पे। हाँ प्रीति, go on. यस, ये धूमावती माँ का तो मतलब जैसे धूमावती एनर्जीज का यही मुझे समझ में आया था कि जो आजकल ये जो फ्लक्स आया हुआ है, दैट फ्लक्स इज आल्सो क्रिएटिंग द माँ धूमावती, कि वी नीड टू इन्वोक हर अगेन एंड अगेन टू ईट दैट फ्लक्स, टू ईट दैट जो एक कॉस्मिक फ्लक्स जो अभी एनवायरनमेंट में फ्लो कर रहा है, दैट ओवर पावर्स आर सबकॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस माइंड को जैसे ओवर पावर कर लेता है और हमें बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस बर्डन में ले जाता है। तो दैट नीड्स टू बी क्लियर आउट। तो इसके लिए माँ धूमावती को बारी बारी इन्वोक करना और टू क्लियर आउट दैट बर्डन फ्रॉम आवर लाइफ्स, बेसिकली इट्स वेरी हैवी। जिसका रीजन कुछ समझ नहीं आता है, लोगों की लाइफ में सब कुछ इजी है, दिख रहा है, बट somehow that things are not moving up, so that is Ma Dhumavati where intervene and can clear out the things। और उसके लिए वो पेस अलग अलग हो सकता है, बट थिंग्स कैन क्लियर आउट। अच्छा, is Atharva here? Thank you, Preeti. Very, very well said. That is the nature of Dhumavati. Is Atharva here? Chance? थैंक यू। Mansi sadly no today. अच्छा ठीक है। बट अथर्व ने ये कहा था कि उसको ना ब्लैक होल की एनर्जी फील हुई करके, और नेक्स्ट डे ना जो धूमावती का जो नेक्स्ट डे उनका ये रहा था, लाइक वो जो नशा था ना वो चला था नेक्स्ट डे तक। एंड आई रिमेम्बर दैट अथर्व वाज टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल, दैट एनर्जी फेल्ट लाइक दैट एंड शिवो एक्सप्लेन्ड। एंड और वो दिन तो बहुत बहुत मुझे लाइक वो पूरा घूम रहा था मेरे लिए। और आई रिमेम्बर कि आफ्टर आई टॉक टू शिवो, जब मैं फोन मैं रख रही थी ना, बिकॉज आई वॉच अ लॉट ऑफ I watch a lot of videos on cosmology and astrophysicists, जैसे ब्रायन कॉक्स है, जैसे नील डिग्रा टाइसन है, मैं रोज देखती हूँ कुछ ना कुछ उनका। यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन हमने माँ धूमावती को इन्वोक किया उसी दिन चंद्रा टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल, मैंने बोला कि ये ब्लैक होल के क्यों आ रहा है, यानी वो तो पता ही है कि फोन सुनता है सब कुछ, बट ये ब्लैक होल का ये आया क्योंकि जस्ट दैट सेम डे एक गैलेक्सी में द चंद्रा टेलीस्कोप पिक्ड अप अ ब्लैक होल ईटिंग अ स्टार, एक स्टार को खा गया था और वो दूसरी वो ही एनर्जी यूज कर रहा था दूसरी स्टार को खाने को। ओके, ये एम कुछ तो गैलेक्सी में ये हो रहा था, ये चंद्रा टेलीस्कोप पिक। तो इसमें सब एस्ट्रोफिजिक्स बोलने लगे, और जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कॉस्मोलॉजिस्ट है, जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, जो ब्रायन कॉक्स है, तो ही वाज शेयरिंग कि आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल is the end of time। मैंने बोला यार यही स्टोरी तो शिवो बोल रहे थे कि ब्लैक होल ने टाइम को ही खा लिया, जैसे धूमावती ने शिव जी को ही स्वॉलो कर दिया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। एंड देन आई वाज आल्सो थिंकिंग यार ब्लैक होल्स पे क्यों स्टडी करते हैं, हाँ ये तो अपनी क्यूरियोसिटी है, बट व्हाट आई फाउंड आउट इज कि इसमें जो लर्निंग होती है ना, जो विद्या मिल रही है हमको ब्लैक होल्स की स्टडी से, that is used to create quantum computers। और क्वांटम कंप्यूटर्स का डिफरेंस ये है कि हमें हमेशा जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है इसमें बाइनरी होता है, 1 या 0, ऑन या ऑफ, ये 2 स्टेट्स है, बट इन अ क्वांटम कंप्यूटर both the states can happen at the same time। you can have 1 or 0, you can have 1 and 0, 1 or 0, so both those states हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि there is no duality in that, है ना। तो एंड दिस हैज ह्यूज एप्लीकेशंस, और यही अभी ये होली ग्रेल है क्वांटम कंप्यूटर्स का, है ना। सो आई एम लाइक दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस विद्या इज एंड हाउ इट मैचेस आवर माइथोलॉजीज। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड एट दैट कोइंसिडेंस। एंड देन वी गो टू महागौरी। शिवो, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? शिवो, दिस इज शॉकिंग ना कि उसी दिन ब्लैक होल, किसी हमें पता चलता है कि ब्लैक होल कुछ
एक स्टार को वो फर्स्ट टाइम वो कैप्चर हुआ कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है. क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट. मे बी इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. कि we also discussed that how on our chakras we experience black holes. और जब भी वो ब्लास्ट होते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है, एंड हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक होल्स. कि जो जो सक इन करते हैं वो टाइम को, एंड देन दे बिकम द रिजर्वोयर, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट रिलीज. वो काफी लंबा डिस्कशन था. आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट हियर बिकॉज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. या मानसी प्लीज. Yeah. So we will discuss this. रिकॉर्डेड है And ना, इसमें शक्ति साधना में भी रिकॉर्डेड है. बुक लॉन्च के टाइम पे वो डिस्कस किया था एक्चुअली. and yeah, and Shivo, the thing is, had it not happened there, na, I wouldn't even have known कि Einstein का ये prediction है. वो सब इतना and that this mythology actually it is scientific also. This wouldn't, all these revelations wouldn't have happened. So yes. Anyway, we come to day 8, Ashtami, which is the day of Mahagauri. It's a day of gratitude. It's a day of Ma of Ma Tara, and it's our Shivo. It was our Shivo's birthday. The book launch. एंड अबनाज मैं इस डे के लिए वेट कर रही थी, डोनर्स का थैंक करने के लिए. मैं भूल ही नहीं थी. बट सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज. ओके, बिफोर वी गो टू द 9th day, we'll talk about all this. First, I would invite Abnaz to start with gratitude to all the donors. So I'll call Abnaz. Yes, Mansi, I'm very much here. So, as all of us know that when the program was to start, when we were having our team meeting and we were wondering how many people will join in, will it be 50, would it be 100? Shivo suddenly came up with a number called 108. And try as a team to achieve it. And I think on the first day, just before invocation. Just before invocation, we touched 108. And I have been with Quanto Life for the last 3 to 4 years. I keep forgetting. Oh my God. Then my earplugs went away. Can you all hear me? 1 minute. Yes, we can hear you loud and clear, Abnaz. Continue. Yeah. So my first ever program with Quanto Life was Shakti Sadhana. And at that time, we were a very small knit. Really, we touched each other's heart because we knew each participant, and it was a very small group. It was a very different Shakti Sadhana. But over these few years, Shakti Sadhana, as you all know, has really evolved and changed. So this time, again, like last year, Mansi said, we'll do it on a donation basis. And we were surprised that in the couple of very first few days, we had so many donors. And till today, we have donors pouring in. And if you yet wish to donate, you all are more than happy to donate. And 900 was just a suggested donation, but you are happy to donate even more. So I'd like to really, from the deep heart, thank each one of you all who've already donated. And the list. Whole team joins in that. Whole team joins in the gratitude. Yeah, the whole team. Yeah, absolutely. So it was Pankajji who did our Jai Ganesh, and then Lata, Meenaji, Shobha, Dr. Kavita Gupta, Unmochika, Gunjan, Chetan, Santosh, Poonam Tripathi, Dinesh, Sangeeta, Rohini, Pallavi, Madhvi, Rashi, Dr. Deepak and Dr. Alok, Ruchi, Lakwinder, Ranjana, and Suman. And Mansi, I want to add here that I'm so happy that we put up this list of gratitude that Lakwinder had actually made a donation on the 3rd of October. And he didn't see his name and he hadn't shared his screenshot with anybody. So sometimes if people do make donations, but if you don't share the screenshot, we'll probably not know that you've made a donation. So it's always advised that please share your screenshot that we can tap into it. And I'm happy Lakwinder
did come up to me saying that, and he sent his screenshots. So that's how we added him. But he was also one of the very first few who donated. So thank you very much, and God bless each one of you. Thank you, Mansi. Yeah, thank you. Thank you so much. And when you go to Gauri, that is really the energy of gratitude. There was huge. Who do I, Shivo? We want to talk about launch also. Who do I invite to talk about the launch? देखो आप देखो We had so all the launch people, if y'all can come in. Piyu थी, रूपाली थी वहां पे, और कौन था यहाँ के ग्रुप से? मनीषा मनीषा बुलाओ ना। मनीषा का है। भोपाल से स्पेशली गई थी। हेलो। हाँ मनीषा, हाँ आप आइए। चलो, अतिन हाँ, गया एक था यार। मनीषा आप आ जाइए मैदान में अभी। बहुत एक लोग मिनट थे में इसमें। Pio was also there. Lot of people were there that day. Mukul. A lot of people were physically present, but a lot of people were on Zoom as well. So that is Yes. also hats off, because the attendance on Zoom was amazing. There were 21 that day. people, which we That only meant and showed how much, that only showed how much we all, wanted to be there but couldn't be there, kind. Absolutely. The love for Shivo, the love for the book, yeah. मैं ऐसे वो ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट अभी आप बताइए। मैं ऐसे And Atharva also was there. Atharva was also there. हाँ मनीषा, मनीषा तो बताइए हमें। हाँ, लॉन्च तो मेरा वहां जाना तो बहुत ही मिराकुलस था। एक्चुअली आई वाज नॉट एट ऑल थिंकिंग कि मेरे को जाना चाहिए, एंड सडनली 2-3 days बिफोर वैजंती कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट कि आ जाओ, शिव सर बोल रहे हैं मीटिंग में आने के लिए। तो मैं मीटिंग में गई। 11 o'clock 10 o'clock को जो मीटिंग होता है उसमें गई मैं, और उस दिन मेरी छुट्टी थी। एंड सडनली पता नहीं क्या पॉपअप हुआ कि नहीं, आई शुड गो देयर। एंड माय हस्बैंड वाज डूइंग हिज ऑफिस जॉब, एंड मेरे पास IRCTC का कोई ऐप वगैरह रहता ही नहीं है, क्योंकि इधर अक्षत डज रिजर्वेशंस फॉर मी और उदित। तो मैंने उदित को बोला यार देख लो, तो बोले तुम डाउनलोड करो ना, मैं मीटिंग में हूँ। तो मैंने फटाफट डाउनलोड किया एंड देखा वहां राजधानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टिकट था, सिर्फ एक टिकट, और मैंने वो पकड़ लिया बिल्कुल से। और फिर बाद में पता चला, बाद में अच्छा आते टाइम भी मेरे को टिकट्स चाहिए थे, और मेरे को मेरी सिस्टर ना मेरे साथ आने वाली थी, तो 2 ही टिकट्स मिले इसके आने वाली ट्रेन के, और वो सुबह नेक्स्ट डे 12th को सुबह 5:30 बजे था, एंड इट्स टू अर्ली फॉर अस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और उसके बाद में क्या हुआ कि जौहरी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एंड ही सेड कि आप भेजो टिकट्स कौन से आ रही। तो मैंने कहा LTT पे आएगी, क्योंकि मैंने LTT डाला था उस पे। और जौहरी जी बोलते हैं कि मनीषा वो तो LTT पे रुकेगी ही नहीं, तुम्हारी गाड़ी CST पे रुकेगी। अरे मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मेरी रिसर्च शुरू हुई कि मुझे कैसे जाना है, क्या जाना है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया, अक्षत ने समझाया। अब जब मैं अकेले जा रही थी फर्स्ट टाइम मुंबई, तो बहुत ज्यादा मतलब अंदर से था कॉन्फिडेंस, बट बहुत ऐसे लग रहा था यार अकेले कैसे जाऊंगी, लोकल की टिकट कैसे लूंगी, बहुत सारी चीजें जा रही थी। मीनवाइल गणेश जी ने मैसेज किया कि आई एम नॉट कमिंग बिकॉज माई टिकट्स आर नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, 12-12:30 बजे मैं और मेरे हस्बैंड स्टेशन पे खड़े, और अचानक से देखा कोई सामने से चला आ रहा है बंदा, एंड आई वाज यार इसको देखा हुआ लग रहा है कहीं तो भी। और गणेश जी थे, तो मैंने एकदम से शाउट किया, ओ गणेश जी आप। तो माय हस्बैंड वाज आस्किंग ऐसे क्यों चिल्लाने लग गई एकदम से, तुम कौन है ये। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं, फिर मैंने पूरी स्टोरी बताई, एंड देन माय जर्नी वाज सो कंफर्टेबल। फिर हमने सारी चीजें की। अच्छा सुबह मॉर्निंग मतलब 5:30 बजे जाना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, बट मेरे ब्रदर इन लॉ का फोन आ गया, भाभी आप टिकट रिजर्वेशन उससे नहीं जाओगे, ट्रेन से नहीं जाओगे, मैं आपके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरी और मेरे सिस्टर इन लॉ की फ्लाइट की टिकट बुक की, और हमारा बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ। लॉन्च के बारे में बताओ। हाँ क्या लॉन्च के बारे में बताओ। हाँ, फिर लॉन्च में ये हुआ कि जब हम गए वहां पे, एंड आई सॉ देयर मतलब एक अलग ही वाइब्रेशंस थे। और मेरा लालच ये था लॉन्च में कि आई रियली वांट टू इम्बाइब द एनर्जीज,
एंड शिवो सर को ऑनलाइन सुनना एंड ऑफलाइन सुनना, इट्स रियली, मैं तो बोलती हूँ कि बिकॉज सी ऑनलाइन में तो है ही शिवो सर की वाइब्रेशंस एंड उनका ऑरा वी कैन फील, बट जो ऑफलाइन में जो ऑरा आप ना जो हिट होता है वो तो इट्स रियली डिवाइन, इट्स रियली डिवाइन। एंड एंड आई एम रियली अमेज नहीं बोलूंगी मैं, वाव था एकदम कि शिवो सर बार बार आंखों में पानी, मतलब मैंने इतना किसी इंसान को इतना ओवरवेलमिंग होते हुए नहीं देखा अपनी लाइफ में, जो मतलब वो एक देखा कि मतलब वाकई में 100 years तक का मैं लेगेसी कैसे हमारी लेगे बुक को कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, बिकॉज बिकॉज हर एक फॉर्मूला शिवो सर ने इतना इजी करके रख दिया, इतना इजी करके रख दिया है, एंड थ्रू दिस बुक इट्स रियली वंडरफुल। एक एक चीज जब लोग वहां पे, जब सब लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस चैप्टर 5 सब लोगों के, इट्स नॉट अ, मैं बोलूंगी इट्स अ सिंक्रोनिसिटी की हर लोगों का चैप्टर 5 ही निकल रहा था, मैक्सिमम लोगों का चैप्टर 5 निकला कि कैसे आपको आपकी आइडेंटिटी को कैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी, अगली आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी। और एक बंदा तो आया एंड वो तो मुझे लगा कि एकदम अपोजिशन में था, ही वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग एनी थॉट, और बिल्कुल डिनायल मोड में था कि वट एवर इज गोइंग ऑन हियर, तो वो एकदम से कट करने के लिए आया था। शिवो सर ने उसको बोला चलो लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ लो, और उसको जो शिवो सर ने हैंडल किया, इट वॉज अमेज्ड। कई बार हमको कोई बोलता है ना कि ऐसे नहीं ऐसे होता तो हम फाइट करने लग जाते, बट शिवो सर का एटीट्यूड उस दिन था टेक अ लॉन्ग डीप एंड, तो और चैप्टर कौन सा निकला उसमें कि व्हाट इज कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, कि आपके ईएमएफ वाला, वो ही निकला जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, सेम टू सेम चीज आई। एंड देन उसके बाद जो वो बैठा था तो फुल एकदम बलून फूला हुआ था, और जब वो उठा वहां से तो एकदम पिचका हुआ बलून एकदम। सो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मस्त ओरेकल बुक है किसी को भी and food was good, everybody was good, and I met Alok ji, I met Deepa di, and सबसे मिली, बहुत ऐसे लगा कि नहीं आई एम विथ माई सोल फैमिली। मुकुल, यस आई रियली अप्रिशिएट मुकुल की, जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो मुकुल मुझे घर तक एकदम ड्रॉप करता है, एंड दैट डे ऑल्सो ऑल्दो ही वॉज वेरी लेट, लेकिन स्टिल उसने मुझे बिल्कुल घर के बिल्कुल गेट तक ड्रॉप किया। थैंक यू सो मच मुकुल, इफ यू आर हियर एंड यू आर हियरिंग मी, तो इट्स रियली वंडरफुल ट्रिप फॉर मी। और समेशन गणेश जी ने किया नेक्स्ट डे क्यूईसी में, मानसी वो भी बता दो। यस, हाँ आई फील अच्छा, हाँ हाँ अच्छा मैं वो बात बताती हूँ, ओके तो गणेश जी को बुलाया गया। बाद में ना हमारा ऑलवेज ये हमारी क्वांटो कल्चर है कि आफ्टर द सेशंस आर ओवर एक होता है फीडबैक, है ना। गणेश जी ने बोला, एकदम मन की बात बता दी कि मैं इतने लॉन्च में गया हूँ, इतनी बोरिंग होती है लॉन्च नींद आ जाती है, इतनी बोरिंग होती है, पहली बार मुझे मजा आया है किसी लॉन्च में। तो एंड अच्छी बात ये थी ना कि वो अच्छा, और मजे की शिव, बात गणेश जी की ये थी, और मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसी, मतलब ये सब स्टोरी बड़ी मजेदार होती है कि मतलब वो बोले मुझे आके एकदम ऐसे आए, तो पता है क्या हुआ मेरे साथ, आज मैं बताऊं आपको क्या हुआ। बोले मैं बैठा था उधर, वो बुक दे के गया कि इसमें से पन्ना खोलो, तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी कुछ होता है, मैंने खोला ही नहीं। मैंने ऐसा थोड़ी होता है पन्ना खोल के, क्या है ये सब, मैं सब गॉड वॉड में बिलीव नहीं करता। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी मुझे बुक दी, बोला पन्ना खोलो, मैंने रख दी उठा के, मेरे को नहीं खोलना पन्ना, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब बेकार की बात है। फिर मेरे मन में आया कि यार चलो ये खोल ही लेते हैं, हाँ। तो मैंने पन्ना खोला, कौन सा खुला उनका, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम फॉर योर बिजनेस सक्सेस। यस बोला यार 1 महीने से शिवो मुझे यही बोल रहे हैं और यही चीज अब बुक में आ गई। बोला अब मैं कन्वर्ट हो गया मैं आज। तो मतलब मैंने एक पूरे नास्तिक को मैंने आस्तिक बनते हुए देखा, मतलब उन मोमेंट्स में। सही है। यस यस टीनू, आप भी आपका तड़का लगाइए। शी इज नॉट देयर, कांट स्पीक, आगे कैन आगे स्पीक आगे बोलते, मैं हाँ मैं हाँ आगे आज आगे। मैं कैमरा नहीं खोल सकती हूँ कि थोड़ा सा आई एम आउट, मतलब आउट मतलब नॉट 2-3 पैक्स आउट, आई एम आउट फिजिकली समवेयर। दिस हैड टू बी टीनूज पंच। ये टीनू के पीछे से है, ये पीछे से पीछे रहते हैं ये। अरे
और वहाँ एक मजेदार बात हुई। आ गए हैं नहीं मानसी, एक मैं मजेदार समझ बात गई, हुई मैं वहाँ। समझ गई। जब टीनू की खीर मैं सर्व कर रही थी वहां पे, तो मैं ना सबको कार्ड दे रही थी टीनू के। तो मैंने एक बंदे को और पकड़ा दिया, तो कहते मुझे नहीं चाहिए ये कार्ड। तो मैंने कहा नहीं नहीं ले लो। तो बोलते हैं मेरी वाइफ ही है वो। मनीषा, मुझे लगा कि सब लोग सोचेंगे कि आप ही टीनू हो, कि आप दे रही हो कार्ड। पता चला कि आपको वो बोला, आपको ऑर्डर मिल गया कि ये किटी पार्टी चल रही है हमारी। फिर आप बोलोगे मैं भोपाल का ब्रांच संभालती हूँ। अब काश ये का सपना पूरा होगा, बट आई थिंक जल्दी होगा, सोचा है तो होगा। या तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मतलब मैं क्या शेयर करूं द इवेंट के बारे में? हाँ, कुछ भी क्रेसेंडो मोमेंट शेयर कर दीजिए आप। इवेंट आपकी तो शेयरिंग हमने आपके बगैर ही कर ली। पूरा आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगी ना, तब आपको पता चलेगा क्या क्या बातें हुई है आपके बारे में। अच्छा, तो देखो शेयरिंग तो ये है कि मैंने शिव भैया को बोला कि उन्होंने जो गणेश ने बोला ना, पहले मैंने बोला, मैंने कहा शिव भैया जब भी मैं आपके किसी भी इवेंट में आती हूँ ना, इतनी एनर्जी फील होती है ना कि मतलब एक अपनापन लगता है। कोई थर्ड पर्सन भी आएगा ना, उसको लगेगा ही नहीं कि वो कोई नई जगह नए लोगों से मिल रहा है। मतलब एवरीबॉडी इज सो लविंग, इतना अच्छा माहौल होता है ना कि यू फील एट होम। कुछ भी करो, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं इधर बैठो ऐसे बैठो, आवाज नहीं करो, ये नहीं करो, डोंट क्रॉस, बार 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 बार। तो मतलब इवेंट इतना अच्छा हुआ था एंड इट वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड एवरीबॉडी वाज अपने में ऐसे बातें करते जैसे कि पता नहीं बरसों के मतलब बिछड़े हुए लोग हैं कि जो मतलब मिले हैं एंड बहुत अच्छा था इवेंट। और दूसरा मानती मान में एक दिन आप मेरे को हम लोग को मेडिटेशन करा रहे थे, उसमें आपने बोला था कि सबके हॉरोस्कोप में सन होता है ना, यू रिमेम्बर ना? तो मैंने बोला कि सबके हॉरोस्कोप में सन होता है, लेकिन किसी के हॉरोस्कोप में डॉटर तो होती ही नहीं है। ऐसा है। एंड दूसरा तो सब लोगों को पता ही है, मतलब आई थिंक 90% अभी जो लोग हैं कि आई रियली गॉट, मतलब मेरे को लाइफ में क्या करना है, मैं इतने समय से परेशान थी क्या करूं क्या करूं, बट फाइनली मेरे को अपनी लाइन मिल गई है कि मुझे क्या करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय जोरबा किचन। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, चुटकियों में मेरा काम हुआ है, बैठे बैठे नाम डिसाइड हुआ, बैठे बैठे कार्ड बन गया, प्रिंट आउट निकल आए, सब कुछ हो गया। एंड दिस वाज ऑल ड्यू टू ये अपने कम्युनिटी, ये जो कॉन्टो का कम्युनिटी है ना, उसके कारण ईच एंड एवरीबडी सब लोगों का एफर्ट है उतरा। अपना मुकुल, उसके माने मानसी, शिवो, मनीषा, मतलब किस किस के नाम लूं, सब लोगों के एफर्ट से मतलब आई रियली गॉट, मेरा मतलब एक पाथ आगे जाने के लिए क्लियर हो चुका है। बस अब जर्नी शुरू है। टीनू, आई रिमेम्बर कि जब शक्ति साधना की बात हो रही थी ना, यू वर लाइक कि मैं ना मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मैं कुछ कुछ दिन बाहर रहूंगी, बट यू नो व्हाट, क्रिएशन हैपेंड फॉर एवरीवन हु वाज यू नो इन व्हाटएवर कैपेसिटी, जो भी जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ क्रिएशन होना है। एंड मानसी वोंट बिलीव, मैंने कहा था मैं कम कर पाऊंगी, मैंने लेकिन नॉर्मली मेरे को लगता है 9 में से मैंने 7-8 किए हैं, एक आधी मिस किया है मतलब। या एग्जैक्टली, आप ऑलमोस्ट, यस, यू वर देयर फुल्ली। या एंड वो आपका मैसेज आया, सबके मैसेज है, आपका मैसेज आया, मैंने कहा चलो यार करती हूँ, देखो कुछ खोऊंगी तो नहीं पाऊंगी, तो चलो घुस जाते हैं। ये फील ऐसी है कि आप कुछ खोगे नहीं, एंड जो आप सोच के जाते हो ना उससे ज्यादा मिलता है। बिलीव मी, मैं आप लोगों को फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बस सीरियसली आप खुद सोच के आते हो उससे ज्यादा आप लोगों को मिल जाता है। दैट इज ट्रू। एंड ये एक ऐसी एंड मानसी ये एक ऐसी स्पेस है कि आप अपना इंटीमेट से इंटीमेट चीज आप शेयर कर सकते हो, कोई भी चीज शेयर कर सकते हो, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी एंड नो बडी विल जज यू। दिस इज द ब्यूटी कि नो बडी जज यू। एंड नॉर्मली वर्कशॉप्स होती है, वहां पे कोई आपका हैंड होल्डर नहीं होता, आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, कई बार आपको उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज का जवाब मिलेगा, मतलब आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। कोई भी आदमी इनकम्प्लीट नहीं जाता, मतलब अगर 10 कोचेज है तो एक ना एक तो आपको हेल्प करेगा, अगर एक बिजी है तो दूसरा सामने खड़ा होगा, दूसरा है तो तीसरा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटो लाइफ कि एवरीबॉडी इज फॉर एवरीवन। सीरियसली लव यू ऑल।
You मानसी yes, मुझे Deepa? हाँ मानसी मुझे एक चीज ऐड करना है यहाँ पे एंड हाँ जी आई रियली अपलॉड फॉर फॉर जौहरी फैमिली। वाकई में मैंने जौहरी फैमिली को मतलब स्क्रीन पे ही देखा था एंड कभी बहुत एक ही बार मिली हूँ मुंबई में। एंड जितना सपोर्ट मुझे इस ट्रिप में जौहरी फैमिली का मिला है, क्षितिज, दिव्या एंड ममता जी एंड जौहरी जी, यार ये अलग ही टाइप के लोग हैं। मतलब मैं ये गई उनके क्वांटो घर में, होस्ट है, ये अल्टीमेट क्वांटो होस्ट है। आई थिंक ये जो भी मुंबई अल्टीमेट, आता है ना, एंड दे जो बोथ भी आर वेरी मुंबई आता बिजी है, बट हाँ मेरे को 10 मिनट में फोन आ रहा है तो मुझे बताओ ये करो। एंड पूरी जो ट्रिप थी ना, जो कॉन्फिडेंस था मेरा ना, उन्होंने ही दिया। एंड गणेश जी भी मेरे साथ में थे तो मुझे बड़ा हेजिटेशन लग रहा था कि चलो मैं तो जा रही हूँ लेकिन मैं उनको लेके कैसे जाऊं। तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाने का सोचा। मैंने जौहरी जी को बताया कि मैं जा रही हूँ। जौहरी जी ने एकदम अपना बन के, नहीं दोनों लोग मेरे घर आओगे करके। और ममता जी ने खाना खिलाया, इतने अच्छे से खाना खिलाया, मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम उनके यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और बिल्कुल वाकई में थैंक यू सो मच एंड आई रियली पूरा फुल ग्रैटिट्यूड टू जौहरी फैमिली एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही आप लोग वाकई कमाल के हैं। तो एक चीज समझ में आया कि इन लोगों का वाकई में दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल वाले हैं इन लोग। थैंक यू सो मच जौहरी जी। So good you gave us opportunity to uh, do something for you, or this is something very common actually, but nothing special, you know. So, जौहरी जी but anyways, you are बहुत लोगों के लिए किया है, बहुत बहुत क्वांटोस का ये एक है ना, ये क्वांटो हाउस इन मुंबई है एक्चुअली, मानसी जहाँ इतने एक्चुअली क्वांटोस। फील के भगवान ने ये चार को बनाया ओनली कि किधर से भी दुनिया से क्वांटो कहाँ भी बॉम्बे में रीच हो, विल नॉट बी होमलेस। जौहरी जी को एक फोन करो, उधर जाओ, उसका होमलेस घर क्या खुला बात ही है। है। yes, 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 yes. He's- एंड द फूड तो आई टोटली वाउच फॉर, है ना। एकदम मेरे को अभी भी याद है वो जो पूरीज या जो भी खाई थी मैंने, एकदम ऐसे टोटली वॉच। please और keep. जौहरी जी का बर्थडे भी था, है ना, इंदिरा जी का बर्थडे भी था इस दरमियान, पंकज जी का बर्थडे था। I is Jyoti here? I also want to highlight कि she also started. Jyoti आप हो यहाँ पे? और Deepa, I'll come to you in a minute. I don't want to forget Jyoti. Jyoti, are you here? Yeah. Yeah, Jyoti also. Jyoti has. Jyoti आप भी शेयर करिए क्योंकि महागौरी का टाइम है ना, मुझे सारे इसको जिन्होंने क्रिएट किया सबको बुलाना है। ज्योति आपने भी नेक्स्ट स्टेप लिया आपके इसके लिए, है ना, आपने वो पोस्टर्स वगैरह लगाए थे Yeah, तो। and thing I want to share, अभी मेरे साथ ही टेम्पल में मैं अपने जागृति टेम्पल में जाती थी मॉर्निंग में, तो देयर वाज अ लेडी जिसको मैं बस देखती थी, बट आई वाज नॉट अवेयर कि वो कौन है। जैसे उस दिन तुमने क्वेश्चन डाला था मानसी ने कि आपके विजडम सर्कल को बनाने में क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आई सेड यस। और द नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ वो शिवलिंग की वो लोग सफाई कर रहे थे, तो मैंने भी बोला कि मैं भी करा देती हूँ आपके साथ। एंड जब हम वो कर रहे थे तो शी आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बोला ज्योति शर्मा। तो वो बोलती है कि आपका कोई निकनेम भी है, तो मैंने बोला कि "अ, हाँ बीनू"। तो शी सेड कि जो आप चीनू की बहन हो, तो मैंने बोला हाँ। तो वो मेरी कुछ मेरी मदर के उसके फादर और मेरी मदर और वो सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और शी इज ए सीए नाउ। और उसने मे बी शी मस्ट बी अवेयर ऑफ माय प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो शी टोल्ड मी कि आप मुझे अपना सीवी दो तो मैं आपके लिए एक जॉब ढूंढ सकती हूँ। आप मुझे बताओ कि आप क्या कर सकते हो। और साथ ही साथ आर्या और मैंने मिलके जो लॉन्च किया अपना वो विद्या शक्ति पाठ, और वो हाँ हाँ, व्हाट इज द नेम? तो इस नवरात्रि में मेरे लिए दो अपॉर्चुनिटीज तो आई। तो मुझे लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्लीपिंग, मैंने कोई भी दिन पूरा अटेंड नहीं कर पाई। मैं कितना थकी होती थी, मैं सो जाती हूँ। आज छुट्टी थी तो मैं दिन में सो गई, इसलिए मैं अभी जगी हुई हूँ। बट मेरे लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहा ये नवरात्र।
अभी तो मैंने मैंने पता ये एकदम ये सिंक्रोनिसिटी, यही है महागौरी, यही है जुपिटर की एनर्जी। एंड ज्योति, नाउ दैट यू हैव टेकन द नेक्स्ट स्टेप, वो सारे पोस्टर्स आपने बनाए हैं, तो लेट अस यू नो ब्रिंग इट टू क्यूईसी। ओके, आप भी एक स्लॉट लीजिए, आप भी आइए, आप भी शेयर करिए, और ठीक है? एक और वो मिरेकल हुआ। मुझे एक बहुत एजेड से वो मिले हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो कीर्तन भी करते हैं, और निशुल्क 40 ईयर से ही सर्विंग, लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं। लाइक जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही लोगों के लिए दे दिया है, इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो मुझे तो इस नवरात्र में 3-4 चीजें ऐसी लगी कि जो मेरे फेवर में हो रही हैं, और मेरे लिए लोग मुझे आके टकरा रहे हैं। क्या So बात है, क्या बात है ज्योति, आई एम so thrilled to hear this. एकदम, may the blessings always be with you. और शेयर करते रहिएगा। दीपा, आप आ जाइए, आपका भी हाथ बहुत टाइम से ऊपर था, आप आइए, आप शेयर Mansi, करिए। Mansi, Mansi. मुझे हाँ इधर, जी। sorry, I'm interrupting and again No, hijacking. I want to add here for Jyoti that how हाँ, Shivu has been talking in these 9 days, no? कि when you put your intention to God, God puts in 10x. I feel Jyoti has been looking after the Akhandiya fort for such a long time with full dedication, love, and एकदम प्यार and दिल से. I think the amount she's been doing for all the god and goddesses and the entire community every day, God is giving it back to her, like in 10 folds. That's what I just had this feeling when she was talking just now. So I couldn't stop sharing. अरे यार, ऐसा बिंदास शेयर करो यार, ऐसे इंटरप्शन थोड़ी ना है। ये सब हमारी शेयरिंग ही हो रही है। इट इज, आई एब्सोल्युटली 100% कॉन्कर, यू नो, कंकर विथ यू। ओके, एब्सोल्युटली। मैंने तो देखा है कि अगर आप क्वांटो लाइफ में वॉलंटियर कर रहे हो ना, तो आप लाइफ लाइफ देख ही रहा है, और वो कभी खाली हाथ नहीं, वो वो नहीं जाता, वो वेस्ट, वो 10x करके ही आता है। यस दीपा। हाँ, सी आई जस्ट वांट टू, बाकी तो लोगों ने सारा कुछ शेयर कर ही दिया है। बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ, and means like I can't tell you, that was the transforming event for my full family. like अभी तक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फैमिली में नहीं देखा जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इस इवेंट में अपनी फैमिली में मम्मी पापा के बीच में देखा। पापा और भैया का रिलेशनशिप जो चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो मैंने अभी देखा। और वन थिंग आई मस्ट टेल यू, when I enter in the hall, energy was such a vibrant energy, such a vibrant energy. And उसके बाद पता है, उस रूम में जो एंटर हुई लक्ष्मी माँ, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, आई थिंक योर कजन्स, योर मासीज ग्रैंड डॉटर। और पता है उसने इतना प्यारा ड्रेसअप किया हुआ था, इतना प्यारा, और इतनी चंचल, इतनी क्यूट। और मुझे तो जैसे ही वो एंटर हुई तो मुझे लगा माँ लक्ष्मी शिवो को ब्लेसिंग्स देने आई है। मुझे पूरे टाइम वो बच्ची सिर्फ माँ लक्ष्मी का स्वरूप दिख रही थी। मैंने उसकी मम्मी को और मासी को ये बात मैंने शेयर की कि मुझे ये बहुत बाय हार्ट फीलिंग आ रहा है कि शी इज माँ लक्ष्मी इज कमिंग एंड गिविंग ब्लेसिंग्स टू शिवो। ये मुझे बहुत बाय हार्ट फील हुआ। दूसरा मुझे जो फील हुआ, मतलब पापा वॉज सो हैप्पी ड्यूरिंग एंटायर इवेंट। एंड मैंने पापा को पूछा, पापा बॉम्बे चलोगे क्या भैया के इवेंट में? एंड मीन्स लाइक देयर वाज नो रेजिस्टेंस, एंड हैप्पीली ही सेड हाँ हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, ड्राइवर का अरेंजमेंट कर लो, चलते हैं गाड़ी लेके। मैंने कहा पापा ड्राइवर का अरेंजमेंट मुश्किल है, कोई बात नहीं उबर कर लेंगे। तो पापा बहुत, मतलब माय फादर इज नॉट रेडीली स्पेंड मनी, और 10,000 रुपए अगर एक इवेंट के लिए खर्च हो रहे हैं तो इजीली ही विल नॉट डू इट।
बट ही सेड ओके, कोई बात नहीं, खर्च हो रहे हैं तो तुम कर लो, ऊबर कर लो। मतलब सब चीज इतनी सहजता से हुई, और पापा का विदाउट रेजिस्टेंस कहना कि हाँ हाँ चलेंगे, ड्राइवर कर लो, टैक्सी कर लो, कैसे भी चलेंगे, तो मैं पापा बहुत पैसे खर्च होंगे, कोई बात नहीं, होने दो, चलेंगे। एंड उसके बाद जो पापा ने इवेंट एंजॉय किया ना, मतलब मुझे ऐसे पापा के फीलिंग्स इतने वाइब्रेटिंग और पॉजिटिव लग रहे थे पहली बार भैया के लिए। मीन्स लाइक आई वोंट से कि पापा ने कभी किसी को अप्रिशिएट किया हो। ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स, ही नेवर अप्रिशिएटेड एनीवन। और वो कहते हैं कि मुझे अप्रिशिएट नहीं करना होता है किसी को, क्योंकि अप्रिशिएट करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। एंड ही वॉज द प्रोफेसर। तो उस जमाने में ये होता था कि स्टूडेंट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि वो आगे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वो फर्म बिलीवर हैं इसके। तो भैया को तो उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। बट इन दिस इवेंट उनके फेस से मुझे लग रहा था, वो अप्रिशिएशन वर्ड्स में नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका वाइब्रेशन मुझे बहुत फील हो रहा था कि ही इज रियली ब्लेसिंग हिम दिस टाइम। उनके रियल ब्लेसिंग्स मुझे भैया के लिए महसूस हुए। और आज हम लोग आरोही में हैं, और आज पापा से मिले तो आलोक ने पूछा, पापा शिवू कैसा रहा सुधीर का इवेंट? तो पापा ने मतलब पहली बार उतने ही वाइब्रेशन के साथ बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। ही सेड Wow. 3 टाइम्स, ही सेड 3 टाइम्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि यार वो वाइब्रेशन जो मुझे फील हो रहे थे बिल्कुल अच्छे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मम्मी के साथ पहली बार शायद उन्होंने भैया के लिए हार्ट टू हार्ट बात की वापस आने के बाद। एंड मम्मी को पूछा उन्होंने कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो मम्मी ने कहा क्या दोगे आप? कहते क्या दे दूं उसको, मेरे को भी कुछ बुक लॉन्च के लिए देना है। तो कितने दे दूं, 21,000 दे दूं, 11,000 दे दूं? तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो मन है दे दो। एंड ही रिटर्न अ चेक ऑफ 51,000। हेलो। Deepa, we've all heard and we know many parts of the story. And I think we are all overwhelmed that there has been this transformation in It's a in their real all blessings, real transformation happened in mummy papa's relationship, in Shivo and papa relationship. And like papa ने शायद 51,000 first time in the life by heart शिवो की बुक के लिए दिए। The event was really fantastic. जो वहां पर सजावट और प्लेसमेंट और हमें जरूर कहना चाहिए आज इस प्रोग्राम के अंदर कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम कराया था जिनोवा ने। और Georgie, this person doesn't want to be named. That is why we are not taking the name. अच्छा, So ओके, आई yeah. डोंट नो, So there is आई a डिडंट नो reason. दैट। मैंने बहुत लोगों को नहीं पता है तो but this person has wants to really remain anonymous to the extent कि उन्होंने बोला अगर मेरा नाम बाहर आया तो मैं हट जाऊंगी ये पूरे इससे। तो that is the reason we are not. नहीं, it's okay, no harm done. लेकिन Okay. लेकिन लेकिन इतनी अच्छी Yeah, it was amazing. आ रही थी सजावट वगैरह, और जो पूजा का दीपक का अरेंजमेंट था वो मतलब सब सामान अपने घर से लेके आए पूजा के लिए, और उसके बाद में संभाल के, और हम लोग जैसे ही हम लोग अंदर आते थे वो सबको घर से बना के लाया हुआ हलवा खिलाते थे। बहुत बहुत ही अच्छा। मतलब सो 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 नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब वो जगह के अंदर इंसानी फितरत है, डाउट तो कर ही सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है। तो वो जगह में अगर वाकई में ज्यादा लोग आ जाते, ठीक है, मतलब तो ऐसा लग रहा था ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बाहर खड़े रहना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन
the hall was overflowing only to the extent that it was keeping the show. It was increasing the vibrance of the show. बहुत ही बढ़िया सब कुछ ऑर्गेनाइज था, और इस तरह से इधर से हमारी साइड से भी जिन लोगों ने, जो वॉलंटियर्स थे, उन लोगों ने किया होगा, और उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज ऑल टू गुड. अगर आप मौका दें तो मैं जरा 2-3 मिनट और बोल दूं क्या स्टार्टिंग से इस प्रोग्राम के बारे में. हाँ, Shauri ji, we listen to you, but I want to hear from Shivo. है ना, ये जो दीपा जी की शेयरिंग के बाद I want to hear from Shivo, and then we come back to you. Shivo, what is, how are you? मैं आया था तो मुझे मम्मी ने भी बताया था, तो I really feel it's a beginning, it's a beautiful beginning. Because everyone, there is so much history. I'm not going to discuss, but there is so much history, and there is history from past lives. There is so much in this, right? It is not just about 51,000 or something. It's like, it is just something so huge. And if this is not a blessing, I don't know what is. Like, it is really that moment, where you just like soak in that there is like a new beginning. Like, it is almost कि ये, I think सोचना भी impossible लग रहा था. अगर कोई बोलता तो वो impossible ही लगता. But yeah, so Shivo, you want to say a few words, and then how is it like? It is just, yeah. मानसी, जब से मुझे ये सब पता लगा ना, और आज ही शाम को मेरी बात हुई, I couldn't control, like tears are rolling in my eyes like anything. And whenever I sit in the meditation or invocation, I always just pray to Ma ki just create the harmony in the family, just create the harmony in the family. और खत्म होते final touch, I think Ma has shown the harmony in the family. True blessing, really. यार यानी मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती. Like, it's just actually value creation. This is value creation. Value is not like in multiple ways. We have this is new creation, a new beginning. New creation ही है ना? Yes, it is new creation, and it is tremendous value creation. और ना ये जो दर्द है ना, वो माँ समझती है ना. ये जो मल्टीपल लेवल्स पे जो दर्द है ना इस चीज का. My gosh. Just yes, Jory ji, you can talk, Abnaz, and then we will move to day 9 and invocation. Just before Jory ji says, I want to add to what Deepa was saying. Deepa said Ma Lakshmi walked in with that baby girl walking in. But actually, when I had spoken to Leena Masi, the reason she actually came for the event was, she said, how can I not give blessings to my granddaughter from Shivu on his birthday? So of course I will come there. And can I bring my granddaughter also? So see the perception. They came to take blessings, but Deepa could view it as Shivu being blessed. So this is how we all view things differently. And they both got blessed eventually. And Deepa, your story brought goosebumps and very teary. So I can imagine how you all are feeling actually, because you all are facing it. God bless you all. ये सब बात हो रही है ना, तो मैं ये भी बोल दूं कि प्राश्वी का बर्थ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था. और ये मैंने किसी को शेयर नहीं की है स्टोरी, एक्सेप्ट मे बी इट इन सम पार्ट्स टू शिवो. एंड विद दैट बर्थ ना, like it was a very like there was a long time, there was a long struggle for that. And now there is some misunderstanding also, that has not misunderstanding, there's some hurt also that I have felt very hurt. तो ये भी आज मैं माँ को ऑफर करती हूँ, क्योंकि ये जो बर्थ था बहुत डिफिकल्ट था, ये हो नहीं हो रहा था. ये इसकी भी एक कहानी है जो मैंने नहीं शेयर की है. शायद मैंने वो but there was a lot that happened. My father had passed away, and I invoked my father, which I never have asked Papa for anything after he has gone, or even then.
तो ये एक स्टोरी है, तो मैं आज ये भी माँ को ऑफर करती हूँ, है ना, इसमें जो है वो भी मैं माँ को ऑफर करती हूँ आज. So I will. Shivo, can we go to day 9 now? And he can, yeah. आई थिंक जौहरी जी को अब बोलना Yeah, चाहते थे. Johnny, please go on. हाँ, तो ऑन डे 1 जो कुछ सीड करना था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली. 2 दिन से मैं इसी में था कि क्या करना है. लेकिन फर्स्ट डे व्हेन इन्वोकेशन के टाइम पे जब आप कुछ कह रहे थे, तो मेरे को उसमें मसाला मिल गया, मुझे क्या सीड करना है. यू गेव मी द मानसी, यू गेव मी द दैट सीड विच आई प्लांटेड. तुम्हारा वो वर्ड एसेट पकड़ लिया मैंने. ठीक है, कौन सा? एसेट. एसेट, हाँ, SSET, एसेट वर्ड जो था इन्वोकेशन के टाइम पे जो तुमने बोला था, मैंने वो वर्ड पकड़ लिया. और घर में तो हमारी वैल्यू जो है ना, वो यूटिलिटेरियन है. ठीक है, वी आर नॉट एसेट्स इन आवर हाउस, वी आर यूटिलिटेरियन. लेकिन चूंकि हमारा बिजनेस है, मतलब हमने कंपनी खोली हुई है, तो जो भी हम लोग जितने लोग हैं अभी टीम में, तो हाउ डू वी बिकम एसेट फॉर द कंपनी. You know, when we go for valuation of the company for fundraising, value of the company is required. Knowledge economy में human beings की वैल्यू होती है. मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू होगी या जमीन होगी या कुछ होगा. तो हम लोग हाउ आर वी, तो मैंने यही सीड किया था कि हाउ वी पीपल, टीम मेंबर, ह्यूमन बीइंग्स बिकम एसेट टू द कंपनी. When the valuer, the RBI approved valuer put some value against each of us. तो ये मुझे मिला था. और बीच में ये जो मैंने 1-2 दिन बोला भी था कि ये जो महाविद्या और फिर देवी वाले जो लेके आए बीच में, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ही रहा था पूरे टाइम इसके अंदर कि ये क्या क्या है कहानी. और क्योंकि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, तो मेरे को बहुत चीजें, लेकिन मैं प्रोग्राम अटेंड करता रहा, सब सुनता रहा, बिकॉज वैल्यू क्रिएशन के अंदर मेरा जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था. और जो वाइब्रेशन इस पीरियड में होने थे, उनका भी बेनिफिट मिलना था, और सीड भी किया था. ठीक है, तो उसका पानी वानी लगता रहे, उसको बराबर पानी धूप मिलती रहे, तो उस हिसाब से. एंड बिलीव मी मानसी के इवेंट के बाद में अगले दिन मैंने उसी से रिलेटेड कुछ बातें जो है शिवो के साथ करने लगा. और आज आज वो चीजें मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये कहां से, ये महाविद्या कहां से आ गई, महाविद्या की देवियां कहां से आ गई इस प्रोग्राम में. एंड क्योंकि मे बी फर्स्ट डे सेकेंड डे जब तुमने बोला होगा तो मिस हुआ मेरा, और वो कंफ्यूजन रहा. लेकिन आज आज का मेरा प्रोग्राम अटेंड करने में मेरा मतलब, वंस अगेन आई शुड से, मेरा पैसा वसूल बोलने वाली बड़ी आदत है. और टाइम इज मनी. तो मतलब आज लास्ट डे वाले, मतलब इसमें सेलिब्रेशन इवेंट के अंदर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव बीन एबल टू अटेंड दिस प्रोग्राम. एंड this 10 days, now I feel that it is all so clearly and neatly passed, with in addition to everything that has come. Thank you so much. Thank you, Jory ji. So we go to day 9. We go to Bagalamukhi. We go to Ma Siddhidatri.
एंड वो लिमिटेशंस जो देता है सैटर्न, वी गो टू सैटर्न एनर्जी, वो एक ये भी था कि पूरी pretty much everyone was busy, everyone was in the launch, it was one of those days, and I think you realize कि even limitation can become a step for success. Like what you learn in your limitation stays with you forever. Or yeah, that is what I think I'm really, really grateful for those 20 people who were there. And yeah, I really have, you know, Shivo, you want to say anything about? Okay, you were not there. So okay, so yeah, we were very grateful कि अर्चना आई थी और उन्होंने उनकी हमने लाइफ स्टोरी एक्सप्लोर करी, how it is like Saturn, and yeah, it was a very intimate time, and yeah, you know, like sometimes I feel कि you learn through synchronicities, you learn the joy, and you raise your vibrations in a Jupiter energy. But कभी कभी वो हार्ड वे सीखना पड़ता है, कभी कभी वो लिमिटेशन से ही, वो लिमिटेशंस में जो लर्निंग आती है ना, वो इतनी पक्की होती है ना, वो इतनी कॉन्क्रीट होती है, और शायद वही मैसेज था बगलामुखी का, एंड दैट इज अ मैसेज ऑफ सैटर्न. So I invite anyone who has not been called or has to say anything, please do now. क्या बोलते हैं इंग्लिश वेडिंग में, ये बोलते हैं कि स्पीक नाउ और फॉर एवर होल्ड योर पीस. तो दिस इज दैट टाइम. ऐसे लगता है कि अभी सारे महाविद्या एक 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 जाके ऐसे, यू नो, वी हैव कम टू द लास्ट पॉइंट, एंड I think I'm really, I think there is no words left in me now. So yeah, Shiva. Uh, does anyone want to say anything before we go into invocation? प्रणाम शिव सर, प्रणाम मानसी जी. Yeah, Pranav. Yes. हाँ मानसी जी, मेरा तो कॉन्टो लाइफ में जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो शक्ति साधना से ही हुई थी लास्ट ईयर. तो
आज मेरा फर्स्ट बर्थडे है क्वांटो लाइफ में, तो माँ आदि शक्ति को माँ आदि शक्ति को और क्वांटो टीम को मेरा डीप डीप नमन एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। Thank you, Dinesh ji. Shivo, do you want to say something? We go to invocation. So I can see and I wish and I hope that there is a total new birth, total rebirth of yours. और अभी फर्स्ट बर्थडे है। थैंक यू शिव सर, है ना? So many blessings and God bless you and all the best. थैंक यू सो मच, थैंक यू। This is the last day, the last moments of this Shakti Sadhana. Yes, Kunjan. I know, एकदम साइलेंस अच्छा लग रहा है आज अभी. It's such beautiful energy. It's just but I wanted to give deep gratitude for what all I've received here. But एक चीज मैं शेयर करनी है कि शिवो का बर्थडे के दिन मैं सोच रही थी विश कर लूं, बट आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू कॉल एंड विश ऑन अ बर्थडे rather than a message. तो मैंने सोचा the अष्टमी my kids had holiday, तो शिविका is always there. if she, तो आई थॉट कि चलो मैं और शिविका विश कर लेते हैं. लेट्स ट्राई अ वीडियो कॉल इफ पॉसिबल. उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मैसेज कर लूंगी. तो शिवो ने जल्दी उठा लिया एंड आई एम विशिंग एंड पीछे से नाभ्या केम एंड ही इज otherwise so shy, doesn't come on camera, hides away. And I wished happy birthday Shivo, and वो दरवाजे से जैसे आया and he's like happy birthday, and he came and he was sitting behind me in front of the camera. And then Shivika came and I was like wow, एकदम मेरे लिए तो गजब ही हो गया. तो मैं तो सोची नहीं थी कि नाभ्य भी आ जाएगा, बट शिवो से वीडियो कॉल पे बात भी हो गई और दोनों बच्चे भी नो दैट डे उनसे बात कर पाए, विश कर पाए. इट्स अ ब्लेसिंग. उनको इस तरह से वो लोग विश कर पाए और शिवो could receive that call. That was amazing. Thank you so much, Shivo. Yeah, it must be a very special moment for you. Very special moment for you. And it's always wonderful to see your kids. Thank you. Okay. नहीं पंकज जी, नहीं देखी मैंने. I think I must have missed. शक्ति साधना में भी पोस्ट किया हुआ है. मैं अच्छा. उसको दोबारा मैंने टैग किया था आपको और शिवो को. एक्चुअली दैट इज मोर लाइक प्रेयर कि वो ठीक प्रेयर है जैसा. पंकज जी, आप पढ़ लिए. हम लोग उसी से इन्वोकेशन में चले जाते हैं. डज एनीवन नीड अ बायो ब्रेक? Does anyone need a bio break? Okay. ठीक है पंकज जी, if you can, and then we'll immediately go in that invocation. Yeah. I think it's very late for India people, so. Yeah, Pankaj ji, do you want to read today? Or this is for?
जैसा बोले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, As you wish. okay, Pankaj ji, let's you go ahead, but we will already go into invocation place. So I invite everyone to go into Quanto Mudra, Quanto Asan, and just take in Pankaj ji's words, and from there only we will go into invocation. Yes, Pankaj ji. महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा चा भवती महादेवी महासुरी। हृदय और कौंचो दर्शन को आशीर्वाद दे, हृदय में आत्मगूढ़ रहस्य को आशीर्वाद दे। हे आनंदमयी माँ, जो हर प्राणी में जीवन शक्ति स्वरूप विराजमान है, वो आपको जीवन का आशीर्वाद दे। सर्वस्वरूपा काल और का आशीर्वाद दे। समृद्धि सौभाग्य स्वरूप देवी माँ लक्ष्मी आपको समृद्धि का आशीर्वाद दे। विद्या बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। पवित्रता और ऊर्जा की देवी माँ शैलपुत्री आपको पवित्रता का आशीर्वाद दे। ज्ञान तपस्या और वैराग्य की देवी माँ ब्रह्मचारिणी आपको श्रद्धा भक्ति का आशीर्वाद दे। शांति और सद्भावना की देवी माँ चंद्रघंटा आपको निर्विकार होने का आशीर्वाद दे। सृष्टि विश्व ब्रह्मांड धारण करने वाली देवी माँ कुष्मांडा आपको सृजनात्मक होने का आशीर्वाद दे। साहस और शक्ति स्वरूपा देवी माँ स्कंद माता आपको अपराजित होने का आशीर्वाद दे। आत्मबल और रूपांतरण स्वरूपा देवी माँ कायत्यानी आपको रूपांतरित होने का आशीर्वाद दे। दया अभय प्रकाश स्वरूपा देवी माँ कालरात्रि आपको प्रेम प्रकाश में होने का आशीर्वाद दे। आंतरिक शांति सौम्य स्वरूपा देवी माँ गौरी आपको ओजस्वी तेजस्वी होने का आशीर्वाद दे। पार्वती पूर्णा सर्व सिद्धा सर्वशक्तिमान देवी माँ सिद्धिदात्री आपको स्वसिद्ध चैतन्य होने का आशीर्वाद दे। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। Thank you, Pankaj ji. With this prayer, all our Navratri Devis have been invited into this space. For the last time, I take everyone's name in this Shakti Sadhana. Shivo, Mansi, Abnaz, Neelamji, Arun, Deepa, Dinesh, Jyoti, Kunjan, Nabhya, Shivika, Lakhvinder, Madhvi, Pankaj, Philomena, Poonam, Rohini, Rashi, Sangeeta, Shobha, Usha, Uttara, Mala, Raji, Anishka, Anand.
Hey, Ma. We are gathered today for the last time in this Shakti Sadhana. And feel this embrace of the mother. She's all around you. Her womb is always there for you. Her voice like a lullaby. She's always around. Her presence as the Navratri Shaktis, the Shakti steps of Ma Parvati, the reservoirs of energy that is Mahavidya. But ultimately, she's just your mother. As we go deeper in invocation space, I just want to give my gratitude to you all and to Ma. I ask for forgiveness for any mistakes that I may have made that I'm not even aware of, and some which I know and I'm aware of. I can feel the vibrations of everything we have learned. The experiences we have had is going deep. All these Mahavidyas, Shaktis. Are going deep inside your cellular structure. Just entering you from space. It is energizing you. And I feel that cord between you and all the Mahavidyas. Feel your own connection, feel that umbilical cord to all these Mahavidyas. We have access to them.
Feel your connection to all the Mahavidyas. Ma Kali, Ma Matangi, Ma Channamasta, Ma Kamalatmika, Ma Bhuvaneshwari, Ma Tripura Sundari, Ma Bhairavi, Ma Dhumavati, Ma Tara, Ma Bagalamukhi, Ma Matangi, to all the 9 planets, Mercury, Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, to all the 9 Shaktis of Navratri, Ma Shailputri, Ma Brahmacharani, Ma Chandraghanta, Ma Kusum Anda, Ma Skandamata, Ma Katyayani, Ma Kalratri, Ma Mahagauri, Ma Siddhi, Datri. And this with all these blessings, we are going towards creating ourselves, creating some things, Rajan. I'll be silent as you observe what you want to create. You, your life, the dimensions of your life. And whatever you observe now, that is where a new creation will happen. So I'll be silent as you observe yourself and your life.
Now, if you are ready, we will go into Shavasana. We will surrender all our ideas, all the dimensions we have observed. Everywhere we have called and requested more to come. We will all now surrender it to space and let the space create the new us. Let the space create whatever is best for the whole world. Thank you so much for going on this journey with us every day. Shubh Ratri, Shubh Navratri. May the blessings of Ma always be with us. Thank you.